Sorry, I am on mute. Yeah. Okay. Yeah, I'm audible, guys. Yeah. Good evening, everyone. Good evening. Yeah, good evening. Good evening, everyone. ठीक है. So let's start. So let me tell you what we are going to discuss in today's session. First, I will take coding problems. Actually, there are few problems which are there in your platform, like module questions are there. Okay, so that module questions I will take. After that, okay, that question I will take. Then I will start because your list has been completed in your last session. So today I will go with tuple. At once tuple will be completed, I will go with slicing. Okay, because slicing why I am discussing that also I will tell. क्यों मैं आज discuss करूंगा slicing को that also I will tell. Okay, so I will complete tuple today and I will start slicing. And one more thing, guys, this slicing concept is very, very, very important for you. As a data scientist or as a data analyst, you need to know each and everything about slicing. ठीक है, तो slicing आपका बहुत important is something different. It is very, very important. बहुत important. Okay. So let's start with module questions. ठीक है. So please let me know is my screen is visible or not. Everybody, is my screen is visible? Okay. Let me tell you how to solve module problems. Okay. So in your curriculum, like in your portal, you will see this type of portal is there. Okay. This type of portal you guys are having. So if you want to solve any question based on a particular module, so how you will do it? You will see learn is there. Go in that learn. So we have completed introduction to Python. Click on this. Now here, यहाँ पे आप देखोगे this is your this third icon. You will see one coding assessment has been given. What is our objective is to solve this coding assessment. To solve this coding assessment. So now I am going to tell how to solve coding assessment in your Alma Better platform. So two problems I will take. With the help of these two problems, I will solve and we will get some. Clear everybody? क्या करने जा रहा हूँ मैं? What I am going to do? Everybody is clear? So this is your Alma Better coding platform. What we need to do is you will see some question has been given. And what is my objective is to solve this question. मुझे ये problem solve करनी है. अब ये कैसे करें? Try to understand. This is known as your editor. Editor means somewhere you are going to write your. यहाँ पे मैं क्या करूंगा अपना कोड लिखूंगा. Okay. And after writing your code, you need to give some input. हमको कुछ input देना होगा अपने कोड. तो वो हम लोग यहाँ पे देंगे. And after that, we will click on the run code or run test. And at last, we will click on submit button. ठीक है, submit का मतलब क्या होगा? आपका कोड जो है वो submit हो जाएगा. Okay. So let me remove everything so that I can start from the beginning. Okay. So this is the problem. What's your BM? What I need to do is write a Python program to calculate your body mass index. Okay. So मुझे क्या चाहिए? Body mass index. Body mass index. ठीक है. And what we are having as an input? We are having something like body mass index is a value that is derived from mass and height. तो अगर आपको BMI निकालना है तो आपको दो चीजें होनी चाहिए, मास और हाइट. Mass means weight. Mass means weight. These two we need to have. Now, what is BMI? The BMI is defined as body mass. Body mass means whatever weight is there. Weight divided by the square of the body height. तो क्या है फार्मूला क्या बन रहा है? Try to understand. BMI is equal to defined by mass. So mass divide by. So whom we need to divide? Divide by square of height. Square of height. So square of height means we are having height. ठीक है, इसका square. This is your square. Okay, this is your square. After this, and is expressed in the unit. Some unit has been given. ठीक है, resulting from mass in kilogram and height in meter. If your BMI is 18.5 or 24.9,
it falls within the healthy weight range. So they have given that if your BMI is in between this one, you are having a good weight range or healthy weight range you are. Okay. So this is our problem statement. Now in this problem statement, if any question is there, please leave. इस प्रॉब्लम में किसी क्वेश्चन है तो पूछ लो। मुझे बीएमआई फाइंड करना है और मेरे पास क्या क्या है। बीएमआई क्या होता है, मास और हाइट, मास और हाइट, मास डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर, मास डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर। दिस इज माय बीएमआई फॉर्मूला, ये हमारा बीएमआई का फॉर्मूला। ओके, आफ्टर दिस हाउ टू राइट द, नाउ जस्ट थिंक व्हेन वी आर हैविंग हाइट और मास, हाइट और मास हमको एंड यूज, एक चीज याद रखना, whenever you are going to write any code here, जब भी आप कुछ भी कोड यहाँ पे लिखोगे ना, आपको यूजर जो भी इनपुट होगा वो पास करना पड़ेगा। यू नीड टू पास दैट इनपुट फ्रॉम द एंड यूजर। सो एनीबॉडी टेल मी हाउ टू टेक एंड यूजर, फॉर एग्जांपल मास इज देयर और हाइट इज देयर, आई वांट टू टेक मास एंड हाइट फ्रॉम द एंड यूजर। कैसे लेंगे, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द एंड यूजर, इसको किसको याद है। we will use we will use input function। आपका input function होता है input लेने के लिए। why we are having input function, to take input from the end user। okay, so just write input, that's same as it is here also we will write। अब समझ, ये जो input function होता है, this input function, this will take everything in the form of, this will take everything in the form of, ये जो input function होता है ये सारी चीजें किस फॉर्म में लेता है, string format, string format। but your height or mass will be in, like what is the type of your mass and height, height अब किस फॉर्म में होती है, कौन सा डेटा टाइप होता है height की, it is float। तो हमको क्या करना पड़ेगा, we need to typecast, we need to typecast it, just write float like this, same as it is here for float also। अब मैंने बीएमआई तो कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज योर बीएमआई फार्मूला, दैट इज हियर यू विल सी मास डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द बॉडी हाइट, square of the body height I have calculated, and this is your mass, and I am dividing। okay. After this your next objective is to print your BMI, that means जो भी रिजल्ट आएगा मुझे उसको सेव करना है एक वेरिएबल के अंदर, दैट इज BMI। अब इसके बाद क्या करना, after that your next step is you will see some input is there, so just copy this input। आपको ये input copy करना पड़ेगा, you need to copy this input and paste this input here। आपको input देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे देखो paste करो। after that click on run, so it will check whether your code is correct or not। now here it is giving me an error, and what is the error, could not convert string to float। so this string is not converted in the form of float, that is the reason which we are getting। anybody think it, why this is coming, क्यों आ रहा है, even your code is correct, your code is correct, still we are getting could not convert it in the form of height, क्यों आ रहा है, सोचो, anyway, why this is coming, why this error is coming। कोई गेस कर सकता है, Vikram is telling quotation, okay, anything else, think what is missed, कहाँ पे गलती है, we need to convert BMI to float, okay, quotation, okay, okay, where quotation is missing, कहाँ पे quotation आप लोग कह रहे हो मिस हो रहा है, where quotation is missing, there is an interspace between 6 and 65, so yeah, space is there, na, 6 and 65, oh, I think next line it is, yeah, now you will see. Okay, but it is incorrect, our result is incorrect, because you will see your original result is 1.80, but यहाँ पे ये आ रहा है, अब ये क्यों आ रहा है, I think it is coming because of this string,
तो इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ. फर्स्ट इवेल्युएट हाइट ऑफ द स्क्वायर देन डिवाइड. अगेन वी आर गेटिंग सेम थिंग. अब कहाँ पे गलती हो रही है, फाइंड करो कहाँ पे गलती है. तो बताएगा. कहाँ पे गलती है. नहीं, प्रायोरिटी हमेशा एक्सपोनेंट को रहती है वहां. ठीक है, इस केस में एक्सपोनेंट. आई थिंक बीएमआई का फार्मूला कहीं पे गड़बड़ किया है हम लोगों ने. लेट मी चेक. लेट मी चेक द फार्मूला ऑफ बीएम. हाँ, weight is there and height square is there. So I think it is correct. Weight is there, that is your mass value, divided by height square, that is 2. And then we are printing BMI. Why we are not? 6 is my mass value and height. Just stop. I think हम लोग से गलती क्या हो रही है. मुझे ये लग रहा है ये गलती. ओके, लेट मी चेक. हाँ, दैट इज अ मिस्टेक. व्हाट इज अ मिस्टेक, कोई ग्रैब कर सकता है कहाँ पे गलती हुई थी. गलती क्या हुई थी, मैंने पहले मास को इनपुट ले लिया था, बल्कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज योर हाइट, 6 सेंटीमीटर इज योर हाइट, इट इज नॉट योर मास. मैंने क्या किया था, पहले मास को ले लिया था. दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मास, अगर मास हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो मास की वैल्यू 6 कंसीडर कर रहा था हमारा. That's why we are getting wrong. So now you will see it is your correct. Once your answer is correct, you will click on run test and you will see your test cases are running. All the test cases are fine. You will see 100 marks and click on sum. Okay. So this is the thing you need to do for writing the simple सा code है. BMI का formula आपको पता है. That is your formula which is there. BMI is equal to weight, whatever weight is there divided by height. So here what I have done is mass, height is there, height square. Or if you are having issue with this, you can write height into height. That is also your height square. ऐसे भी कर सकते. That is your. Okay. This is a code that you need. Okay. So here you will see this first argument is your height and second argument is your mass. So you need to take height as first argument and mass as second argument. And according to that, you need to write you. अब इस कोड में कोई दिक्कत है तो पूछो. सिंपल सा कोड. यार दिमाग वाला. In this code, if any question is there, please let me know. Let me share this code on chat box. आप लोग भी रन करके देख लो वर्क कर रहा है कि नहीं कर. और इस कोड में कोई डाउट है तो पूछ लो. सिंपल सा कोड है. I have taken height and mass as an input, applied the formula BMI is equal to mass divided by height into height, and then we are printing our BMI value. बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये. Is it clear or not? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बताओ. क्लियर क्लियर क्लियर. आखिर क्लियर होंगे आप. Everybody, those who are from non-IT background. तो ऐसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम. सो यू विल सी सेकंड प्रॉब्लम इज आल्सो देयर. सी दिस इज योर सेकंड प्रॉब्लम. ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करोगे एज एन होमवर्क. आई हैव टोल्ड यू हाउ टू राइट द. ओके, सेम एज इट इज वी आर हैविंग वन मोर थर्ड प्रॉब्लम. ओके, सो थर्ड प्रॉब्लम इज write a python program to find x and y value has been given. आपको x and y दिया हुआ है, that is this. So what you need to print, you need to solve this. बहुत सिंपल है. What you can do is print within bracket whatever x plus y value is there into x minus y values, x plus y values, x plus y values. That's it. So here I am taking integer as an input. X and y are my integer value. What I want to calculate this one, that is your x plus y, then into x plus y. And after this 4 and 3 are my input. So just give that in 4. यहाँ पे आपको input देना पड़ेगा. Then only you can run your code. You will see it is checking. Your correct answer is 49, which is correct. And after that you can click on run test. देखो all the test cases are test. So एक homework मैंने दिया है, that is this. So it is also very simple. You are having different things. 2, 2, 4, 4. What is your objective? Find the mid element. Find the midpoint. Anybody just take a guess. क्या कैसे midpoint find करेंगे इसका?
तो गेस करो। निशी, हम लोग इनपुट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पे देखो, आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप इनपुट लोगे ये, इसलिए हम इनपुट ले रहे हैं क्योंकि फॉलो द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, इफ इनपुट इज दिस, इफ इनपुट इज दिस, सो आपको इनपुट फ्रॉम द एंड यूजर लेना पड़ रहा है, फिर आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, तब ये वर्क हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपका इनपुट है, आप इस इनपुट के बेसिस पे अपना कोड लिखो, रन करो और अपना आंसर। ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइस, being a good programmer, it is always recommended to take input from the end user. हमेशा इनपुट एंड यूजर से लेना रिकमेंड किया जाता है, ऑलवेज। ओके, ऑलवेज। ओके, सो ये तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, सबका सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर। व्हाट इज दैट, 2 + 2 + 4, 4 4 8 4 16, 16 डिवाइड बाय 2, sorry divide by sorry 4 4 8 4 12, 12 divided by 3, first 12 divided by 4, आंसर इज 3, वही आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं होता है मैं नेक्स्ट सेशन में इसको बताऊं। अब इस ये 3 प्रॉब्लम्स में इसको सेकंड प्रॉब्लम को स्किप कर रहा हूं, दैट इज योर होमवर्क। इन फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉब्लम इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज लेट मी। इन फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉब्लम इफ एनी डाउट एक्सप्लेन अगेन सर, देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ फिर से जिनको नहीं क्लियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, here we are having here we are having क्वेश्चन, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप देखोगे एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ इनपुट दिए हुए, दिस इज योर इनपुट। ठीक है, तो जब भी हम कोड लिखते हैं, whenever we are writing any kind of code we need to ask from the end user, tell me your input, tell me your input। okay, so here our input is 6 and 64. So how many inputs are there? Two inputs are there. So that's why you will see here 2 times I am asking from the end user to give in. What is your first value? Height is your first value. And second is your mass value, that is your weight. Okay. And after that I am applying BMI formula. What is BMI formula? Mass divided by height into height. And then we are printing BMI. अगर आपको अपने कोड को चेक करना है, so you can copy this input, that is 665, and then you can click on run। ठीक है, आपको अगर टेस्टिंग करनी, इफ यू वांट टू टेस्ट ऑल, लाइक आपको अपने इनपुट्स के लिए चेक करना है, आप अपने इनपुट्स यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको सारे केसेस चेक करने हैं, आप रन टेस्ट पे क्लिक करो। जब आप रन टेस्ट पे क्लिक करोगे ना, आप देखोगे ये इंटरनली सारे कोड को चेक करेंगे, कुछ केसेस पीछे से हैं जो चेक हो रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गेटिंग योर रिजल्ट। बस इतना ही है। सेकंड क्वेश्चन में डाउट है, चलो। हाँ, टेल मी द सम ऑफ ऑल नंबर्स, इन सारे नंबर्स का सम क्या होगा, कोई बताएगा? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स? 2 + 2 + 4 + 4, व्हाट इज द सम ऑफ दिस? इट इज 12, इट इज 12। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन दिस, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 4 एलिमेंट्स आर। ओके, 12 डिवाइड बाय 4, 12 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 12 divided by 4, that is your result, 3.0। okay, and in my output you will see 2 times they have printed 3.0। आप 2 times print कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 times कर दो आप, that is the thing only। समझ आया? रन करके दिखाया तो मैंने, ये देखिए कोड रन किया है मैंने, ये देखो रन टेस्ट मैंने किया है ना, तो देखिए आप रन हो रहा है, कोड रन करके मैं दिखाऊं, that is the code। I have written the code and then I am running that, it is the thing। हाँ, बट हाउ टू मिक्स इट, अरे भाई आकिब सिंटेक्स यही है जो हम लोग कर रहे हैं, कोई अलग से सिंटेक्स नहीं होता है, कोई अलग से सिंटेक्स नहीं होता है। ठीक है, सिंटेक्स यही है जो हम लोग कोडिंग करते हैं ना, दैट इज योर सिंटेक्स, कोई अलग से सिंटेक्स नहीं आता है हम लोग का, समझो इस चीज। क्वेश्चन 2 आप होमवर्क में कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये सारे क्वेश्चन मैं ही बता दूं, आप लोग ट्राई तो करो, मैं तो बता दूंगा, ये सारे आपके असेसमेंट है गाइस, दिस इज योर कोडिंग असेसमेंट, यू विल सी। मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ जिसमें आप कर लो इसलिए, सारे क्वेश्चन मैं ही करके दे दूं क्या? यू गाइस विल ट्राई, अगर फिर भी नहीं समझ में आया देन आई विल टेक।
क्या चीज नहीं समझ में आई नीतीश, मुझे ये बताओ, इसमें क्या ऐसी चीज है? आप दो इनपुट ले रहे हो यूजर से, आपने दो इनपुट लिया यहाँ पे, then you are writing your code, this is what, this is your code, and after that you are getting your result in your BMI variable, then I am printing my BMI variable. बस इतना ही दुख कर, कहाँ कुछ कर रहे हैं इसमें? Which thing you are not able to understand? सेकेंड क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करो, मैं नहीं बताऊंगा सेकेंड क्वेश्चन। आप चाह रहे हो कि सारे क्वेश्चन में बता दूं, मैं नहीं बताऊं, ठीक है? डोंट डू लाइक दिस एवरी टाइम एवरी क्वेश्चन आई विल नॉट एक्सप्लेन। आप ट्राई करना कैसे मिड पॉइंट फाइंड किया जाता है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, आप उस वो लॉजिक लगा दो, मल्टीपल लॉजिक है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के। थर्ड इज वेरी वेरी सिंपल, व्हाट थर्ड क्वेश्चन इज टेलिंग, यू नीड टू सिंपली सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है? एंड वी आर हैविंग एक्स एंड वाई वैल्यू, एक्स एंड वाई वैल्यू हमको दी है, दैट इज 4 एंड 3, 4 एंड 3 आर व्हाट, एक्स एंड वाई, ठीक है? मुझे क्या चाहिए, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय पुटिंग एक्स एंड वाई वैल्यू एज 4 एंड 3। तो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। आप यहाँ पे अगर आपको डाउट है, आप क्या करो, इस इक्वेशन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। What I have done is simply what it will do, it will first calculate x plus y, it will then calculate x plus y, और जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। What it will do, it will multiply these two, and after that I am printing my ELE value। बस इतना ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, ठीक है? एंड ऑफ द फाइल एरर क्यों आया ये, लाइन 3, व्हाट इज, हाँ मैंने इनपुट नहीं दिया था इस वजह से, या दैट इज द थिंग। विश्वजीत, is it clear now? What we are doing is we are just putting this equation, ये इक्वेशन आपकी है, ये इक्वेशन आप यहाँ पे पुट कर दो, अपने आप x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल रहा है, बस इतना ही है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन में अगर डाउट है तो बताओ, सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ट्राई इट, अगर नहीं क्लियर हुआ मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन। फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट, फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क, सेकंड क्वेश्चन इज योर, थर्ड में एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट नहीं दिया। आप क्या करो, आपको एरर नहीं चाहिए, आप यहाँ पे लिख दो 4 और 3, ठीक है? क्या मतलब है इसका, दिस 4 इज माई फर्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड दिस 3 इज माई सेकंड वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 3, ओके? देन यू कैन क्लिक ऑन रन बटन, तो यू विल सी योर रिजल्ट, दैट इज 49, सो 49 इज करेक्ट, यस इट इज। देन यू कैन क्लिक ऑन रन टेस्ट, बस अब कोई एरर नहीं आएगा, दैट्स इट। आर्गा, I have not given input, that's why we are getting the error। अगर आप input नहीं दोगे और यहाँ पे run code करोगे ना, then you will get an error। See, if you are giving your input, then only you can click on run, else you need to click on run test। नहीं, वो मैंडेटरी नहीं होता है आर्गा, दिस इज नॉट मैंडेटरी, ओके? दिस रन टेस्ट इज मैंडेटरी बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस ओनली योर मार्क्स विल बी देयर। आपके जो मार्क्स होते हैं ना वो टेस्ट केसेस पे बेसिस पे होते हैं। सी आई एम नॉट गिविंग एनी इनपुट, मैं डायरेक्टली रन टेस्ट पे कर रहा हूँ, स्टिल इट विल गिव यू रिजल्ट। तो इंपॉर्टेंट होता है रन टेस्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली योर मार्क्स, सी हियर हाउ मच स्कोर इज देयर, 100। तो आपके मार्क्स जो आते हैं ना वो रन टेस्ट से आते हैं, दिस इज जस्ट फॉर चेकिंग योर, if you want to check your code, you can check that code with the help of run। सर 3.0 आंसर आए, सी आ रहा है बट रॉन्ग बता रहा है, 3 आएगा नहीं। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो दुर्गी, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप लोग ट्राई करो, आप लोग चाह रहे हो मैं सारे क्वेश्चंस मैं बता दूं, दैट इज नॉट। सेकंड क्वेश्चन यू विल पुट योर एफर्ट, देन चेक वेदर इट इज वर्किंग ऑन, इफ इट इज नॉट वर्किंग देन आई विल सी। वन सीरियल नंबर हैश था, वो कहाँ पे हैश, पता नहीं आपको क्या बता, ये कमेंट है गाइस, दिस इज योर कमेंट, दिस पार्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। कमेंट कभी एग्जीक्यूट होते हैं क्या?
कमेंट कभी एग्जीक्यूट होते हैं क्या? दिस कमेंट इज देयर, वेदर दिस कमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड? नो, दिस पार्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. In our first session I discussed this thing. If anything is started with hash, that is not a part of your code. हैश कभी भी आपके पार्ट का कोड नहीं, कोड के पार्ट नहीं होता है. Okay, so this is just your comment. After that, you will see I have taken one input x, that is your first value. Then I have taken second value, which is y, and then I am taking my x plus y value, simply this one, and then x plus y here, and then multiply these two. And at last, we are printing our element value, that is EL. Ha, first and third is clear. First and third question is clear or not? Second, आप लोग homework में करो, because I'm not going to tell everything to. आप लोग भी कुछ effort डालो. That is not helpful. हाँ, आप ट्राई करो, नहीं क्लियर होगा आई विल हेल्प. अगर नहीं होता है मैं बताऊं, दैट इज फॉर श्योर, बट एटलीस्ट यू नीड टू ट्राई. क्योंकि इससे पहले मैंने क्यों नहीं कहा था? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू रन दी. नाउ आई होप यू नो दिस थिंग दैट यू नीड टू राइट योर कोड एंड यू नीड टू टेक इनपुट्स एज वेल. ये क्या है? ये हमारा इनपुट है. सो यू नीड टू टेक दैट मच ऑफ इनपुट है. एक्स एंड वाई आर योर इनपुट, एंड देन यू नीड टू राइट योर लॉजिक एंड क्लिक ऑन रन. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूं, दैट इज योर डेटा टाइप्स इन पाइथन. ठीक है. सो हियर आल्सो यू विल सी कोड इज गिवन, क्लिक ऑन दैट. दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम. और किसी ने ये मुझसे पूछा था, शायद फर्स्ट और सेकंड सेशन में पूछा गया. इज इट गाइस? समवन हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, है ना? समवन हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. या, सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. व्हाट इज दैट? वन स्ट्रिंग हैज बीन गिवन. आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, दैट इज योर this is your string, and one word has been given, that is your dance. What is your objective? Your objective is to find how many times this dance is present in your string. So if you will see, one time dance is present, two times dance is present, three time dance is present. Here you will see this capital D is there. तो आंसर हमारा 5 आ रहा है. तो मैं क्या करूंगा? जो भी मेरी स्ट्रिंग आ रही है, वॉट एवर स्ट्रिंग आई एम गेटिंग, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस कंप्लीट स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ लोअर केस. मैं पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा. व्हाई आई हैव डन दिस थिंग? बिकॉज इफ आई एम नॉट कन्वर्टिंग इट इन लोअर केस, देन टेल मी हाउ मेनी टाइम डांस दिस स्मॉल डांस इज प्रेजेंट. अगर मैं लोअर केस में नहीं कन्वर्ट करता हूं, दिस इज माय स्टैंडर्ड. So if this is my text, how many times this small dance is present? कितनी बार present है? 3 बार present. 3 times. But see the answer. How many times answer is there? 5. तो आपका गलत हो जाए. So what I am doing is, जो भी string आ रही, I am converting that string in lower. Now tell me, if I am going to convert everything in the form of lower, जब मैं सारी चीजें lower में convert कर दे रहा हूं, ठीक है? If I am converting everything in the form of lower, tell me how many times this dance is present. अब कितनी बार डांस प्रेजेंट है इसके अंदर? 5 times. अब ये फाइंड कैसे करेंगे? Which method we need to use to count a substring? This is a substring in the given string. Which method we need to use? Count method. Count method. Okay, we need to use count method. So हम लोग क्या करेंगे? Print string dot count of word. बस इतना काम. That's. Let me run tests and check whether everything is working fine. See, your score is 100. That means your code is. अब इसमें किसी को doubt? In this code, if any doubt is there, please let me. Simple code है, कोई दिक्कत नहीं. If any doubt is there in this question, please let me. Simple सा code है, कोई दिक्कत नहीं. But still, if you guys are having, please let me. Please let me know, guys, this problem. If any doubt is there in this. Can you please explain why you added lower? There is a reason. See here. If I am not converting in lower, मैं lower में जब convert नहीं कर रहा हूँ, अब समझना. कितनी बार ये small dance है इस string के अंदर? How many times this small dance is present in this string? देखो, पहली बार तो ये है small dance.
Second time we are having this small dance, and third time we are having three small dance. That means three times my small dance is there, but output क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब तो फेल हो जाएगा, अगर मैं लोअर में नहीं करता हूँ तब तो ये फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि इसको स्मॉल डांस कितनी बार दिख रहा है? सिर्फ 3 बार दिख रहा है, बट हमारा आउटपुट 5 आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कंसिडरिंग कैपिटल डी। ये इसको भी कंसिडर करना। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, मैं क्या करूंगा, मैं पूरे टेक्स्ट को लोअर में कर दूंगा। जब पूरे टेक्स्ट को मैं जब लोअर में कर दूंगा, ये क्या कर रहा है, ये जो भी हमारा इनपुट आ रहा है उस सारे इनपुट को मैं लोअर में कन्वर्ट कर, and after converting that in lower, what I am doing is I am finding how many time dance is present. See, first time dance this, second time dance this, third time dance this, fourth time dance this, fifth time dance this. इस वजह से मुझे ये लोअर में कन्वर्ट करना पड़ा। क्लियर हुआ क्या? रॉनी, इज इट क्लियर? सर जुपिटर पे रन करो, वर्क इज इक्वल टू इनपुट क्यों लिखा हुआ है? सर एक बात क्या कोड रन एंड रन टेस्ट दोनों मैंडेटरी? नहीं नहीं, एक चीज आप कर सकते हो, रन टेस्ट में आपके जो भी टेस्ट होंगे वो रन हो जाए। ठीक है, रन टेस्ट में आपके जो भी केसेस होंगे आप कोई भी चीज कर सकते हो। आप चाहो तो इसको कर लो, जब इसको आप क्लिक करोगे ना रन कोड को, तब ये मैंडेटरी होगा कि आपको ये इनपुट्स देने पड़ेंगे। जब आप रन कोड पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये दोनों चीजें मैंडेटरी हैं, ऐसे आप दो, फिर आप रन कोड पे क्लिक करो, तब ये वर्क करे। अदरवाइज ये रन कर देखो, अभी मैंने रन कोड पे क्लिक किया तो इसने आउटपुट दे दिया। अब ये आउटपुट 5 किसका आ रहा है? ये आउटपुट 5 आ रहा है अगर मैं इसको नहीं देता हूं, मैंने इसको नहीं दिया और मैं रन कोड पे क्लिक करता हूं, एरर आ जाएगी। देखो आ गया। ठीक, तो अगर आपको इनपुट नहीं देना है, डायरेक्टली रन टेस्ट पे क्लिक, आपका पूरा कोड चेक। सो इट डिपेंड्स ऑन यू विच थिंग यू वांट। व्हाट इज इक्वल टू इनपुट क्यों लिखा? नितेश, वी आर टेकिंग यूजर एंड यूजर इन, हम इनपुट फंक्शन क्यों यूज कर, वी आर यूजिंग इनपुट फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द एंड यूजर। कोई इस कोड को रन कर रहा है, मैं उस कोड को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं दिखा देता हूं मैं क्या, ये मेरा कोड है, मैं इस कोड को रन कर, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई अपना इनपुट, भाई अपना इनपुट दो। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस इन, सी this input I am passing here. This is my first input. Enter. Now it is asking what is your second input. Give your second input. मैं second input दूंगा भाई. This is your second input. And after this, when I am pressing enter, see this code is run. That means according to this you are getting your result. तो इस वजह से हम input use कर रहे हैं. Because I am taking this input, this data from the end user. When I am running my code, at that moment I am passing my values. That's why I have used it. Tathagat and Nitish, is this point is clear or not? Tathagat and Nitish, अब क्लियर हुआ क्यों मैं इनपुट ले रहा हूं यहाँ? बिकॉज इफ यू विल सी योर कोड, यहाँ पे कोड देखो आप, कोड में आपके इनपुट दो आ रहे हैं, पहला इनपुट ये और दूसरा इनपुट ये, तो आपको वो इनपुट अपने कोड में लेना पड़ेगा ना, बिना कोड को इनपुट लिए आप कैसे रन करेंगे? यू नीड टू आस्क फ्रॉम द एंड यूजर गिव मी योर वैल्यूज, सो दैट वैल्यूज फॉर टेकिंग दैट वैल्यूज आई हैव टेकन दिस। क्या चीज क्लियर नहीं हुई नितेश आपको? क्या चीज क्लियर नहीं हुई आप बताओ मुझे। हाँ, उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, स्ट्रिंग इज इक्वल टू जो लिखा है ना उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर यू वांट यू कैन राइट दैट, इट इज जस्ट अ वेरिएबल। हाँ नितेश, विच पॉइंट इज नॉट क्लियर प्लीज लेट, तथागत प्लीज लेट मी नो, इज इट क्लियर और नॉट इन जुपिटर नोटबुक? नहीं, कुछ अलग नहीं है, सी कोड सेम है, क्या हो रहा है देख, यहाँ पे जब हम लोग रन कर रहे हैं तो हम इनपुट यहाँ पे देते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे हम रन करते हैं ना तो इनपुट यहाँ पे देते हैं। देखो जब मैंने इसको रन किया तो हम लोग इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं, बट इसके इसमें क्या होता है ना, इनपुट यहाँ पे देते हैं हम, इस जगह पे इनपुट देंगे, देखना यहाँ पे इनपुट देंगे और फिर यहाँ पे इनपुट देंगे ऐसे, ठीक है, इस केस में यहाँ पे दोनों इनपुट हम साथ में देंगे। पर जुपिटर में क्या होता है, पहला इनपुट दिया, जैसे मैंने पहला इनपुट कुछ दे दिया, फिर हमारा दूसरा इनपुट मांगता है, बट यहाँ पे क्या होता है दोनों इनपुट हमको एक साथ देने पड़ते हैं, देन यू नीड टू क्लिक ऑन रन कोड, दैट्स दोनों सेम, बट यहाँ पे सेपरेट बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे दोनों इनपुट एक साथ देने, बस इतना अंतर।
अच्छा नितेश, आप क्वेश्चन देखो, कितने इनपुट है आपके, कितने इनपुट है, ये पूरा एक इनपुट है, फिर आप देख रहे हो कि स्पेस दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, फिर आपका दूसरा इनपुट है, तो दो ही तो इनपुट है, क्वेश्चन में ये चीज दी है। अगर आप यहाँ आ जाओ, यहाँ बताओ कितने इनपुट है, एक लिस्ट ही तो है, वन लिस्ट इज योर इनपुट ना, एनीथिंग एल्स इज योर इनपुट, वन लिस्ट इज योर इनपुट। कुछ और भी है, वो तो आप देखो यहाँ पे पहले से लिस्ट फिक्स करी हुई है, आप उसको, अरे एक और चीज है, आपको ये इनपुट लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके एडिटर में ऑलरेडी इनपुट लिया हुआ है, सी ऑलरेडी योर कोड इज प्रेजेंट, आपको इनपुट लेने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कोड लिखो अपना जो भी लिखना है, ठीक है। इन योर एडिटर नो नीड टू टेक इनपुट, डायरेक्टली यू विल राइट योर, फॉर एग्जांपल इन योर क्वेश्चन दे आर आस्किंग एरिया ऑफ सर्कल, so radius they have already given, pi value they have already given, you just need to write your code here and just click on run, आपको बस इतना काम, आपको इनपुट भी नहीं लेना, आपको कोड में ऑलरेडी दिया हुआ है, समझ रहे हो। अब क्लियर हुआ गाइस, 40 minutes I have spent only these three problems, अब सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ गाइस, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि आप लोग समझो टाइम थोड़ा कम है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें कवर कर, फाइन। So अब थोड़ा स्टार्ट कर दें, let's start our actual session. So everybody please try to solve few problems which are given here. Still if these problems you are not able to solve, don't worry, you can ask to me, I will just explain. अगर फिर भी आप सॉल्व नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, I will help. But one thing I will tell you guys, please एक चीज आप लोग ध्यान रखना, there is one humble request. सब लोग guys notes रिवाइज, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल if someone is asking how input function is working, what is input function, so ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं इनपुट फंक्शन को एक्सप्लेन करूँ एट दैट, या अर्धा आई अंडरस्टैंड, बट वन थिंग आप मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, आप नोट्स पे फोकस, जो चीज मैं नोट्स पे पढ़ा रहा हूँ आप उसको पहले रिवाइज, क्योंकि आप नई फील्ड से हो, तो जो लाइव सेशन में आप सीख रहे हो पहले वो चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, देन ओनली यू विल लर्न न्यू थिंग्स, डायरेक्टली आप कोई नई चीज नहीं सीख सकते। So it is my humble request, please go through the notes, whatever code I have written, use that code, run that code and see whether you are getting the result or not. Okay. So please follow this. Please follow this, because see, right now we are at the beginning stage, but day by day the level is going to be increased. So once we are at top level, it is very difficult to handle these things. तब बहुत difficult हो जाएगा सारी चीजें cover. Okay, so please refer your notes, everybody, please. So let's start. So basically in today's session, we are going to discuss tuples data type. Tuples data type. So one thing you need to remember, tuple is very, very simple. बहुत simple. Whatever we have discussed in list data type, whatever we have discussed in list data type, everything is there in tuple. जो भी चीज हमने लिस्ट में पढ़ी है ना, everything is there in tuple. No and only one difference. So I am going to copy everything. See. This is the thing. So now what is your tuple? Tuple is also a collection of dissimilar elements. So if you want to store multiple elements as a single entity, you can use, okay. Now same, if we want to store multiple values inside a single variable, then we can also use, तब हम लोग tuple use कर सकते, ठीक। Tuples are represented by, tuples कैसे represent होते हैं, tuples are represented by parenthesis, parenthesis, आप parenthesis का यूज करोगे tuple को represent करने के, parenthesis, okay. Tuples are ordered in nature, ordered in nature means all the elements are having their fixed position, सारे elements के fixed position हो, guys give me a moment, guys, एक second, yeah. So what is your tuple? So tuple is similar to list.
Tuple is ordered in nature. What is the meaning of ordered? Ordered means all the elements are having their fixed position. सारे elements की fixed position रहती है. Okay. Indexing and slicing is possible. That means elements are fixed. That's why you are able to perform indexing and slicing. Okay. One more point I am going to add here, and that is a major difference because see, all these points are similar to list. See, यहाँ पे भी मैंने same चीज बताई, यहाँ पे भी मैंने same चीज. Then what is the use of tuple? What is the use of? Remember this, there is one difference between list and tuple. एक difference है list और tuple के बीच में, that is very very important. One difference is there between list and tuple, and that difference is very very important. And in your interview, if someone is asking what is the difference between list and tuple, that thing you need to see. कोई बता सकता है क्या है? Those who knows Python, they can easily tell. Tuples are immutable in nature. Tuples are immutable in nature. Now, tuples are immutable in nature. What is the meaning of immutable? क्या होता है immutable का मतलब? Anybody? What is the meaning of immutable? Yeah. Not changeable. Correct. So that means once you are creating a tuple, अगर आप एक बार tuple को create कर देते हो, you cannot perform any kind of modification. Modification is not acceptable. Modification is not acceptable. Okay. So tuple is fixed in nature. Once you are creating a tuple, you cannot add anything, you cannot delete anything, you cannot perform any kind of changes in that. Everything is fixed. All the elements are fixed. Okay. So that is your tuple. Let me show you some examples. So this example for you. See. If I am just giving this parenthesis, अगर मैं यहाँ पे parenthesis दे देता, now it is what? It is a tuple. अब क्या है? अब ये tuple. Okay, अब ये tuple. So if you are having a square bracket, that means it is a list. If you are having parenthesis, that means it is a tuple. So if you are having parenthesis, that means it is a, अगर parenthesis है, that means it is a tuple. Now let me see. Okay. See, class tuple. That means it is your tuple data. ठीक है. अगर आपका square bracket है, that means it is a list. But if you are having brackets, parentheses, that means it is a what? It is your. इतना आपको दिमाग में रखना. So the point is here, when you are using parentheses for storing multiple elements, then it is nothing but a तब ये tuple. Now if I am giving a square bracket here, then anybody tell me what it is? अब क्या है ये? If I am giving a square bracket here, then what is this? Is it a list or a tuple? No. Is it a list or a tuple? No. क्या है? It is a list now because we have taken a square bracket. So if you are using a square bracket, that means it is a list. If you are using parenthesis, that means it is a tuple. तो ये हमारा tuple. Okay. Now next point is tuple is immutable in nature. Tuple is immutable in nature. How we can prove? कैसे prove? So very simple it is. मैंने पहले भी बताया हुआ है. Again I am explaining this. See. Tuples are immutable in nature. Tuples are immutable in nature. That is the reason we don't have any insertion and deletion method in. तो टपल हमारा इम्यूटेबल है. इम्यूटेबल का मतलब क्या है? क्या मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूं? अगर ये टपल है, क्या मैं इसके अंदर कुछ ऐड एलिमेंट कर सकता हूं? मेरे को 50 ऐड करना, क्या मैं ऐड कर सकता हूं इसके अंदर? Shall I add 50 in this? I want to add 50 in this. Shall I do that?
Shall I do that? I want to add 50 in this. Shall I do that? The answer is no, we cannot do it. Okay. Same as it is, I want to delete this Ansh. Can I do it? The answer is no, you cannot do it. Okay. So that is the reason in case of tuple, we don't have any methods. जैसे आपने list में देखा होगा, in list we are having append, we are having insert, we are having extend, we are having pop, we are having pop index, we are having remove method. But with respect to tuple, we don't have any method like that. Tuples में कोई ऐसा method नहीं. The reason is tuple is immutable. If it is immutable, you cannot add anything. आप add नहीं कर सकते. That is it. Next point is we cannot modify. We cannot modify any element of the tuples on the tuple as tuples are immutable in nature. आप कुछ modify भी नहीं कर सकते tuple. What is the meaning of this? Try to understand. I am having this same tuple. This same tuple I am taking. And what I will do, I want to modify this 20 with 2000. तो कैसे करेंगे? Remember syntax of list. Tuple 1 of index of 20. What is the index of 20, guys? क्या index है 20 का? What is the index of 20? It is 1. 1 index. ठीक है? So tuple 1 of 1 is equal. आपको क्या है? Updated value. That is 2. तो अगर if I am going to print tuple 1, if I am going to print tuple 1, we will get an error. Why we will get an error? Because modification is not allowed. This syntax is for modifying this value. Because first index value is this one and I want to modify this value with 2000. This is not acceptable because it is a tuple. क्योंकि ये tuple है, ये modification नहीं. So that's why if I am going to run this, you will see an error. And what is that error? You are trying to perform modification with respect to tuple, which is not accepted. Python cannot perform that change. That is the thing. Ask your doubts. Yeah. In these points, if any doubt is there, please let. जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया, अगर यहाँ तक किसी को डाउट है, प्लीज let. So that I can repeat. Everybody is clear till now? The second point. Second point is, if we want to store multiple values inside a single variable, समझ देखो, ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यूज हम लोग स्टोर कर रहे हैं? tuple 1 is one variable and in this variable how many values I am trying to store? कितने एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर? 5 elements. 5 elements we are storing. So that line is this one. अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तब आप टपल का यूज कर सकते हैं. तो वही चीज मैंने लिखी हुई है. बस सेकंड पॉइंट यही है. प्याली, इज इट क्लियर? दिस इज योर सेकंड. एक वेरिएबल के अंदर आपको मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है. यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ टपल्स. ओके. एनी अदर डाउट? Any other doubt? अब आपके इंटरव्यू क्वेश्चन चालू होंगे टपक से. Now I am going to discuss few important things which are important for your interview. If I store multiple in single variable list use, हाँ use list भी कर सकते हैं. आप list भी use कर सकते हो, आप tuple भी use कर सकते हो. Both are okay. You can also use list. This is your tuple and same as it is you can also use list. दोनों चीजें कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम. ठीक है. Yeah. Fine. So next important point, that is your creation of tuple. So what are the ways to create a tuple? So that is also important, you need to know. So there are, if you want to create empty tuple, so creation of empty tuple. आप empty tuple कैसे बना सकते? See, two ways are. First way is you can write something like tuple 1 is equal to
only parenthesis like this. This is your empty tuple. One more way is there, that is your tuple 1 is equal to, you can write something like, I think tuple is there. This. Either you can write like this. So both will do, both will give your result as a empty tuple. आपके दोनों tuple जो है वो empty tuple. Let me show. Print type of tuple. Type of tuple. See the type. It is your same as it is next example. TUPL. See, it is also your tuple type. But a question मुझे पूछना है, creating empty tuple, is there any use of that? अगर मैं empty tuple को create करता हूँ, क्या उसका कोई use है? Think. If I'm having an empty tuple, I have created one empty tuple. Is there any use of that? सोचो, क्या use होगा उसका? Anybody? If I am creating empty tuple, क्या उसका कुछ use हो सकता है? सोचो. Anybody? Logical thinking है यार. सोचो, guys. Everybody. It is of no use, guys. Why it is of no use? You can add something. क्या आप add कर सकते हो tuple? Tuple के अंदर कुछ add कर सकते हो. If you are creating an empty tuple, you cannot add anything in this. You cannot delete anything in this. Then why you are creating an empty tuple? So it is of no use. In real time, you are not going to create empty tuple in any case. ठीक है? In any case, you are not going to create empty tuple. याद रखना इस बात. Okay. So in real time, it is a way to create an empty tuple, but in real time, we are not using empty tuple in any of these scenarios. The reason is it is immutable. Immutable means I cannot add anything, I cannot delete anything. अगर आप कुछ add भी नहीं कर सकते हो, ना कुछ delete कर सकते हो, then what is the use of that? Okay. So that is the reason we are not creating empty. That. Now after this, next point is, if you know the number of elements, if we know the number of elements, suppose that if we know the element, we know the, तो आपको पता है, मैंने ऊपर ही एग्जांपल दिया हुआ है. If you know the element, this is up. Simply in parenthesis, you can give your elements. Simply in your parenthesis, you can give your elements. So this is also your tuple. Let me show. If you know the element, you can write this one. You will get your. Okay. See. Now in these 3 points, if any doubt is there, please say. अगर इन 3 पॉइंट पे किसी को डाउट है तो, in these 3 points, if any doubt is there, please let. Everybody is clear with how we can create empty tuple, how we can create tuple with which in which we know the element. अगर आपको element पता है तो कैसे tuple create कर सकते? No use, no use. There is no any use of empty tuple, but still you need to know how to create empty tuple. आपको पता होना चाहिए. Okay. Still we are not using empty tuple anywhere, but still you need to know. After this, next point. So next point is, there is one more important point. Just think. ठीक है, सोच रहा हूं. If I am writing something like this, is it a tuple, guys? Think. Is it a tuple? सोच. This is a quiz question, guys. बहुत बार quiz में पूछा जाता है. Is it a tuple? Those who are saying no, then what is the data type of it? If it is not a tuple, then what is the data type? Now everybody is saying yes. Achha, those who are saying int, what is the reason? Why it is an int? What is an int? Placeholder, कहाँ पे placeholder discuss किया प्याली मैंने? I have not discussed placeholder anywhere. I have not discussed placeholder anywhere. Yes. Remember this thing.
if you want to create a one element tuple, this point is very, very important. Quizzes, somewhere like in quizzes, this is very general question. Okay, one element tuple. If you want to create a tuple with one element, it is mandatory to give. It is mandatory to give tuple comma lines. This is your one element tuple. This comma is mandatory. अगर आप comma नहीं देते, अगर आप comma नहीं देते हो, then this will be considered as an expression. Expression means 10 plus 20 divided by 30. Expression. 10 plus 20 divided by 30. What it is? It is an expression. So if you are not giving comma, then it will not consider as a tuple. तो ये class क्या consider करेगा? It is considering this one as a integer. See. But I want that this is there in tuple. So आपको क्या करना पड़ेगा? You need to put. So when I am putting comma, now you will see it is a tuple. So please remember, if you want to create a single element tuple, एक element का tuple आपको create करना है, आपको element देने के बाद comma mandatory. Only for one element tuple. सिर्फ एक element tuple है. Ask your doubts. This point is important, guys. ये पूछा जाता. Even one of the interviews I have like someone has asked me this question. ये मुझसे भी पूछा गया एक बार. In one of the interview they have asked, I want to create a one element tuple. So many of us, what we are doing is we are creating like this. It is wrong. We need to keep comma. Comma is mandatory. Single element tuple, if you want to create this, comma is mandatory. Then only single element. नोट्स में है आपके, ये देखिए, वन एलिमेंट टपल आपको क्रिएट करना है तो कॉमा मैंडेटरी. ओके, इट इज. मैं इसका भी एग्जांपल लेके आपको दिखा दूं. ठीक है, सी इट इज योर. आस्क योर डाउट्स, पूछो. हाँ, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो डाउट. ओके, नेक्स्ट. Others, comma is mandatory as specific reason. Yes, comma is specifying that it is a tuple. This 10 is present inside a tuple. That's why we are giving comma. Comma means it is a tuple. Okay, that's why comma is mandatory. Comma is specifying that this is a tuple. Okay, comma is specifying this. For single element. For single element. अरे भाई रिस्पॉन्स तो करो. नहीं क्लियर हुआ है बताओ, मैं एक्सप्लेन करूं. अगर नहीं क्लियर हुआ है, you can tell me, I can just explain that. Even for storing, yes, if you are storing a string as well, na, then also you need to give comma. Let me show you that example. वो भी दिखा. See, I am writing Python. Anybody, is it a tuple or some other data type? क्या है? Is it a tuple or some other data type? Think. Is it a tuple or some other data? कुछ और है, tuple नहीं है. It is your string, guys. It is your string, not tuple. And like, tell me, how many elements are there in this? One element is there. And if you want to create one element tuple, comma is mandatory. But here we have not given comma. So आपने comma नहीं दिया है, इस वजह से जो भी इसका type होगा वो consider होगा. That is your string type. So here result will be your string. But when I am giving comma, then it is a tuple. That is it. ठीक है, तो एक एलिमेंट का आपको टपल अगर बनाना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ टपल ऑफ वन एलिमेंट, यू नीड टू गिव कॉमा. कॉमा इज मैंडेटरी. इन दैट केस कॉमा इज मैंडेटरी. क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इज क्लियर? Okay, fine. Now after that there is one topic which is there, that is known as tuple packing. तो ये पूछा जाता है जनरली, मुझसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस थिंग. ओके, व्हाट इज tuple packing?
Try to understand. If I am writing something like a is equal to 10, 20, 30, 40, 50, like this I have not given any bracket. मैंने कोई bracket नहीं दिया. In this scenario, what is the type or whether we will get an error or not? First point is this, whether we will get an error or not. If we are getting an error, what is the reason? If I am not getting an error, then what is the type of? तो ये हमको समझना. So this concept is known as tuple packing. What is tuple packing? Try to understand. In Python programming, in Python, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ so that because if you are going on Google, बहुत complex languages. Let me tell you in very simple language. In Python programming, if we are storing multiple elements inside a single, multiple elements को आप अगर single variable के अंदर store करते, single variable, and we have not given any bracket, then Python will pack all those values. Python will pack those elements inside a tuple. And this concept is known as tuple. तो यही concept आपका tuple packing कहता है. What is the meaning of this? Very simple. I have written here. See, I am trying to assign multiple values. Multiple values मैं assign कर रहा हूँ एक single variable के अंदर. Okay. I have not given any bracket. तो आप जब कोई भी bracket नहीं देते हो, what Python will do? Python will pack all these सारी values को ये pack कर देगा. कहाँ पे pack करेगा? It will pack all those values inside a tuple. And what this complete process? This complete process is known as tuple packing. So what is the type of it? The type of this is nothing but a tuple. तो यही हमारा tuple packing है. What is that? If you are trying to assign multiple values inside a single variable and you have not given any bracket, so in this case, what Python is doing? Python is internally packing all these values. Packing means all the values को एक जगह pack करके रखती. Okay, and that is what? That is your tuple. So this complete concept is known as tuple unpacking. बस इतना ही है tuple unpacking का concept. Now you can ask your doubts. See, it is your simple सा concept. हाँ guys. In this tuple packing, if any question is there, please. Simple सा फंडा है. अगर आपने कोई भी bracket नहीं दिया, then by default what Python is doing? Python is considering that as a tuple. What Python is doing? Python is considering as a tuple. No, Amrita. There is a reason. Let me tell you what is the reason. मैं बताता हूँ. What is the reason? एक चीज आप याद रखना. Suppose that you want to go from Lucknow to Delhi. मैं एक real-time example देता हूँ. Why it is considering as a tuple only? Why it is not list? क्यों Python tuple consider करता है? Why it is not considering as a list? Let me take one simple example. You want to go from Lucknow to Delhi. Okay. There is one train which is non-stop. One more thing is there. One more train is there. That is Lucknow to Delhi. I want to go. There is one more train. That is having 6 stops. Now, if someone is asking to you from which train you want to go from Lucknow to Delhi, कौन से train आप decide करो? If you want to go to Lucknow to Delhi, then train 1 or train 2? Train 1 or train 2? Which one you will decide? Train 1 you will decide. Why you will decide train 1? क्योंकि वो faster है आपके लिए. You will reach to your destination as soon as possible. That's why you will decide train 1. Now let me take one more example. List is made. In your list, you can add anything, you can delete anything, you can update anything. आप कुछ भी कर सकते. In case of tuple, everything is fixed. अब बताना, जो चीज fixed होगी, that will be faster, or something is dynamic in nature. That thing is faster. Which one will be faster? जो चीज fixed होगी, that will be faster,
or something which is dynamic in nature, that is fast. Which one is fast? डेफिनेटली फिक्स्ड वन विल बी फास्ट, क्योंकि वो फिक्स्ड है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, दैट इज फिक्स्ड. अब समझना, अगर पाइथन से पूछा जाए, if I am a Python, I like suppose that I am Python, okay? If I am Python, if someone is asking some some multiple elements are there, I want to store these multiple elements into a single variable. Based on my choice, I will go with list, क्योंकि मुझे multiple elements को store करना है. List भी store कर सकती है, tuple भी store कर सकती है. तो अब मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से विच वन विल बी बेटर, अकॉर्डिंग टू पाइथन कन्वीनियंस विच वन विल बी बेटर, क्या चीज बेटर रहेगी? एनीबॉडी? ऑफ कोर्स टपल इज बेटर. व्हाई टपल इज बेटर? बिकॉज टपल इज फास्टर. टपल इज फास्टर. सो इफ टपल इज फास्टर, डेफिनेटली समवन वांट दैट, वो अपने लिए तो अच्छा ही करेंगे ना. Okay, everybody wants that whatever thing I am going to use, that must be fast, that must be fast. तो यहाँ पे भी वही चीज है, because tuple is faster as compared to this. इस वजह से यहाँ पे tuple का कॉन्सेप्ट आया. Okay, because tuples are fast and tuples are faster, that is the reason by default Python is considering if you are not giving any bracket, if you are not giving any bracket, then by default it is considering as a, अपने आप वो tuple कंसीडर कर लेंगे भाई, उसके हिसाब से तो वो फायदा है. If something is convenient for you, then definitely you will do that. हाँ, correct. It is not mandatory to give brackets for tuple, because by default tuples, if you are not giving bracket, then also it is a tuple. अगर आप bracket नहीं भी देते हो, then also it will be considered as a tuple. And this concept is known as tuple packing. आप समझ आया? और guys, ये बहुत important है. Please remember, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, what is tuple packing? Even I have faced this interview. Okay, I have given one interview. There they have asked what is tuple packing. Okay, so this is very please remember. हाँ guys, tuple packing clear हुआ क्या हो? सिंपल है, अगर आप कोई ब्रैकेट नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो टपल कंसीडर करेगा. बस इतना ही फार्मूला है और कुछ नहीं. नथिंग इज. एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल? सब कंफर्टेबल हो? ठीक है. आफ्टर दिस नेक्स्ट इज योर टपल पैकिंग हो गया. आफ्टर दिस methods used in see tuple के केस में हमारे पास ज्यादा methods, only few of the two methods are there that are generally used. Other than this, we don't have any method because tuples are immutable in nature. So tuples are immutable in nature, that means we don't have much methods to use with tuple. So still we are having few methods, so that methods I am going to discuss. What are those methods? Let me clear that. First method that we are having is count method. Anybody, what count method will do? क्या करता है count method? मैंने बताया हुआ है, अब आप लोग बताओगे क्या करता है count. What count method will do? Everything is same with respect to count. Nothing, no any difference. Everything is okay. This method is used to return the number of occurrences of the given element of your tuple. So if you want to count how many times this particular element is present, you are having tuple method. Sorry, count. Okay. Same example. Let me take one example here. Tuple 1 is equal to, I am taking apple, then I am taking banana, then I am taking guava, then I am taking mango, then I am taking mango, then I am taking mango, then I am taking mango. Now someone is asking how many times apple is present in this. How many times apple is present in this? What I will write? Tuple name, which is tuple 1 dot count. अब कौन सा एलिमेंट आपको काउंट करना है? That's you will get yours. How many times apple is present in this? 2 times apple is present. So result is, so whatever element you have given, how many times that element is present in this, that you are getting. Same as it is if I am giving orange or sorry mango. So how many times mango is present? 1 time, 2 times, 3 times. So 3 is 0.
अगर मैं और कोई एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग pomegranate, right? Okay, see how many times pomegranate is there? 0 times. So with respect to tuples also your count function will work. ठीक है, count function वर्क करता है with respect to is count method use tuple packing? Count method का tuple packing से कोई मतलब नहीं है, both are different. Tuple packing is just a way of forming a tuple. ये आपका tuple, ठीक है. tuple packing क्या है? जो count method है वो आपको सिर्फ count दे रहा है कि कितनी बार पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है. दोनों का कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग अलग चीज. In this case sensitive, हाँ case sensitive, if it is case sensitive then Python will not consider that. Python is a case sensitive programming language. Let me take that example as well. Suppose that I have taken F. Now here I have taken capital A. So capital A and small a both are different. So अगर मैं रन करूंगा एक आंसर आएगा. Why एक आंसर? Why one answer is there? Because only one capital A is present in this. ठीक है, इस वजह से. Python is a case sensitive programming language. Uppercase letter and lowercase letter both are different in Python. ठीक है. Ronnie, is your point is clear? नेक्स्ट डाउट, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो. काउंट मेथड में सिंपल सा काउंट मेथड है, कुछ नहीं है. एवरीबॉडी इज क्लियर विद काउंट मेथड? हाँ. सो आफ्टर काउंट द नेक्स्ट वन दैट वी आर हैविंग इज, इसके बाद हमारा आता है इंडेक्स. व्हाट इज योर इंडेक्स मेथड? सिमिलर, नो एनी डिफरेंस, सब कुछ सेम, सब कुछ. This method is used to return the first occurrence of the given element. Yes, if the element is not present, then this method will return value error. Correct. So here it is your tuple. So what I will do is, let me copy here. I want to check what is the first occurrence. What is the first occurrence of apple in this list, in this tuple? इस tuple में पहला occurrence apple का कहाँ पे है? Anybody? What is the first occurrence of apple in this tuple? In this tuple, what is the first occurrence? At which index your first apple is present? It is 0. So your result will be 0. Same as it is, I am giving mango. What is the first occurrence of mango? What is the index? 0, 1, 2, 3. Third index. Third index. See. Now, if I am giving something like this, what is my result? अब क्या result आएगा? The answer will be an error. Why is it is an error? Because Python is a case sensitive programming language. Look, it is an error. Try to understand why it is an error. Python is a case sensitive programming language. So it will check each and everything. So mango M is small, but here mango M is capital. So that means this string is not present. So if your string is not present, we will get value error. Value error. See, if the given element is not present, this method will give value. So here we are getting value error because this same substring is not. That is your index method. Ask your doubts. Ask your doubts. Everybody is clear? सब clear हो? Guys, please write on chat box. अगर नहीं क्लियर हुआ है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन. ठीक है, बताओगे नहीं फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. अब बताओ नहीं क्लियर हुआ, मैं एक्सप्लेन. Can you show the code once? Yes, I can show you. See.
Okay, fine. After this, next we are having how to access the इतने method हम लोग use करते हैं टपल. Okay, जल्दी we are using these methods. Next is how to access an element of a tuple. ये तो सेम प्रोसेस जो लिस्ट में डिस्कस किया वही यहाँ पे डिस्कस होगा, वही बाकी सब डिस्कस. What are the ways, guys? What are the ways to access anything in list or tuple or a string? तीनों में सेम चीज. What are the ways? What are the ways? Indexing and slice. Indexing and slice. So if we want to access a character or a group of characters, so this is wrong. If we want to access an element or a group of element from a tuple. अगर आपको tuple से access करना है, then from a tuple. Then there are two ways. First way is indexing, second way is slicing. Only these two ways are there. With the help of that, you can access the elements of a tuple. So anywhere, if you want to access the elements of a tuple, these two are the ways. So first I will discuss about indexing, then we will go with slicing. Then हम लोग slicing पे discuss. First is your indexing in Python. Indexing in Python. If we want to access a single element, आपको अगर एक single element access करना है, one single element if you want to access, you will go with index. एक element आपको access करना है, you will go with index. Indexing से आप multiple चीजें access नहीं कर सकते, याद रखना इस चीज. You cannot access multiple values with index. Only one single value you can access. आप सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पे एक्सेस कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स. ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं इंडेक्सिंग, क्योंकि इंडेक्सिंग इजी है. सो लेट मी टेक सम एग्जांपल्स. Tuple 1 and here I am giving something like -3. Anybody, क्या रिजल्ट आए? Which element is present at -3 location or -3 index? Tuple name is this one. Tuple name, which is your tuple 1, within bracket index value. Index I have given -3. So which element is present at -3? It is magnum. See, minus means backward direction, ulta chalna hai. So when we are moving in backward direction, first element is -1. This is your -1. This is your -2. This is your -3. So your answer will be same as it is. अगर मैं लेता हूं print tuple 1 of 4. हाँ, 4 none 6. What is the result? If I am taking 6, then what is the result? देखना, 6 मीन्स पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव मीन्स हमारी डायरेक्शन ये रहेगी. So if it is positive, see positive direction. So indexing will start from 0. So left to right. So from here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apple is your same as it is. अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, tuple 1 within a square bracket, I am giving something like 100. What is my result? What is my result? आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप नोट्स को रेफर कर लोगे. सी दिस लाइन. ये लाइन क्या कह रही? If the given index is not present, so 100 is my index, 100 index is present in this. No, 100 index is not present. So your answer will be at C. Error is coming on.
So if your index is not present, you will directly get an error in that. आपको error मिलेगा उससे. One more example. Indexing आसान है, slicing में थोड़ा दिक्कत. हाँ, what is the answer for this? What is the answer for this? Tuple 1 of 0. It is apple. Yes, see, it is positive or negative. It is positive. Index value is positive. So if index value is positive, I will move in forward direction. So in forward direction, I will start from 0. 0 का मतलब क्या है? We will start from 0, 1, 2. Now index we have given 0. 0 means this one. So apple is your answer. अब बताओ इंडेक्सिंग में किसी को प्रॉब्लम है क्या? मैं और एग्जांपल लूं और shall I go with slicing? In indexing, if any doubt is there, please let me. फिर मैं स्लाइसिंग पे बढ़ूंगी. स्लाइसिंग थोड़ा सा ट्रिकी है. स्लाइसिंग इज लिटिल बिट ट्रिकी एंड आई विल गिव यू एग्जांपल. स्लाइसिंग के बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे. I will also give you homework with respect to slicing. Slicing का आपका homework भी रहेगा because slicing is very very important. Many of the problems you can solve with the help of slicing. आप slicing से बहुत सारी problem solve कर. Fine. So 5 मिनट का आप लोगों का ब्रेक है guys. At 9:30 sharply, I will start slicing. ठीक है. 5 minute break is there because after that in slicing, if you will ask for a break, it is very difficult. So I am giving 5 minutes break. At 9:30, I will start slicing. Okay. So those who want to take water and warm, you guys can do. And those who want to ask any type of question, please let me. अगर कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो तो प्लीज आस्क योर डाउट इन चैट. If doubt is there, please let me. बताइए. If any question, anything you want to ask or anything you want to share, you can share. आप बात भी कर सकते हो अगर आपको बात करनी है तो. नो एनी इश्यूज देयर. ठीक है. आप कोई बात करनी है, पूछनी है. आज स्लाइसिंग का बहुत होमवर्क मिलेगा आपको. आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ होमवर्क विद रिस्पेक्ट टू स्लाइसिंग एंड आई वांट दैट एटलीस्ट एवरीबॉडी गिव अ. ठीक है. आई थिंक फर्स्ट और सेकंड डे आप लोग पूछ रहे थे कि प्रॉब्लम्स दीजिए. ओके. बट नाउ आई थिंक डे बाय डे यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. Is it? Your platform is also having problems. I am also sharing problems like that. Day by day, you will get a lot of problems. बहुत problems आएंगी देखना. Can a tuple be converted into list? Yes, we can convert. कर सकते हैं, कोई problem. ठीक है. कर सकते हैं मुझे. I will tell you. Just hold. Slicing से पहले मैं बता दूंगा कैसे convert करते हैं. So can you quickly tell me once again why Python default is a tuple? Ronnie, tuple जो होता है वो faster होता है. टपल जो होता है वो फास्टर होता है. तो देखो पाइथन जब आप कोई ब्रैकेट नहीं दे रहे तो पाइथन को अपना एक ब्रैकेट कंसीडर करना है. पाइथन को अपना एक ब्रैकेट कंसीडर करना है. तो देखो लिस्ट थोड़ी सी स्लो रहती है. लिस्ट स्लो रहती है. तो अगर पाइथन को कोई भी अगर डेटा टाइप देना है उस वेरिएबल को तो वो वैसा डेटा टाइप देगा जो उसके लिए बेनिफिट, जो उसके लिए कन्वीनियंट होगा और फास्ट होगा. तो फास्ट कौन सा है हमारा? टपल फास्ट. इस वजह से कंसीडर होगा. ठीक है. इस वजह से पाइथन बाय डिफॉल्ट टपल कंसीडर करता है क्योंकि टपल आपकी कन्वीनियंस देखता है कि फास्टर क्या है. या इट इज आल्सो वन एलिमेंट टपल. ठीक है. आप कॉमन नहीं, सॉरी, इट इज आल्सो वन एलिमेंट लिस्ट. बट आप कॉमन नहीं भी दोगे तब भी ये लिस्ट ही रहेगा. बट टपल के केस में ऐसा नहीं होता है. दैट्स व्हाई टपल का एक्सप्लेन करना पड़ता है. अगर आप कॉमन नहीं भी दोगे ना तब भी ये लिस्ट ही कंसीडर होगा. आलोक, आप कॉमन ना दो तब भी ये वन एलिमेंट लिस्ट कंसीडर होगा. ठीक है. इफ यू आर नॉट गिविंग कॉमन आल्सो देन आल्सो इट इज योर लिस्ट ओनली.
Any other question? Amrita, please check the error during execution. You are okay. Let me check that. When I am trying to run VMI code, you have not given input, Amrita. Okay, you are, see, Amrita, you are clicking on run code. So before clicking on run code, whatever input has been given in your question, that input you need to copy paste and paste that in your code, in your like in your input. Then run it, then it will work. आप directly run करे दे रहे हो, run नहीं करना, पहले आप input दोगे, then you can click on run. Okay, that's, you have given quotation, आकेब you have given quotation. और ये ऐसे नहीं कर सकते हो आप. ABCD is your variables here. आप ऐसे नहीं कर सकते हो. ओके, यू कैन डू दिस, पुट इट इन कोटेशन. आपने उल्टा कर दिया, टेक्स्ट को कोटेशन में दे दिया और जो कंटेंट कोटेशन में होना है वो नहीं दिया है. ओके, लेट मी शो. सी, यू आर यूजिंग दिस कोड, आप ये कोड यूज करो. सी, व्हेन यू आर यूजिंग दिस कोड, व्हाट इज ए क्या है, व्हाट इज बी क्या है, यू हैव नॉट मेंशन दैट. इस वजह से एरर आ रही है. आप ऐसे नहीं कर सकते. Okay, you cannot write like a comma b comma. If you want to write, then it is for sure that you need to define that a value is 10, then b value is 20, like that. आपको ऐसे बताना पड़ेगा, a b like that, then c value is 30, like that, d value is something like 40. Then you can write like a b c d. आपको पहले बताना तो पड़ेगा ना a b c d है क्या. और यहाँ पे टेक्स्ट की इसको रिमूव करके कोटेशन नहीं होगा, ये वेरिएबल का नेम है आपकी. This ext is your variable name. So you need to write ext. And this a, b, c, d are your variables name. Now it is acceptable. You can do it. अब ये acceptable है. See, आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप सीधे ABCD लिख रहे हो और ABCD को आपने डिफाइन नहीं किया है. You have to mention that what A value, what is B value, what is C value, what is D value. You have to mention that. Then only you can. Okay? ये mistake है आप. See, आपने बताया नहीं कि ABCD है क्या. You need to tell what is ABCD. Then you will get. ठीक है. Okay, shall we start? Everybody is ready? What is slicing पे? Okay, let's start. See, whatever points I am going to tell with respect to slicing. ठीक है? Slicing. जो भी चीज मैं slicing में बताने वाला, all those things is acceptable in your string, in your list, and in your tab. ये तीनों पे फॉलो होगी. जो भी चीज मैं यहाँ बताऊंगा वो लिस्ट के लिए भी सेम चीज है, टपल के लिए भी सेम चीज है, एंड स्ट्रिंग के लिए भी सेम चीज. ठीक है? ऑल थ्री थिंग्स आर गोइंग टू फॉलो दीज. ये सारे चीजें यही रूल फॉलो करेंगी, वॉट एवर रूल आई एम गोइंग टू टेल. नाउ, व्हाट इज स्लाइस? फर्स्ट टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइस? स्लाइस का मतलब क्या होता है? ब्रेड स्लाइस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइस?
pieces, fragment, okay. Slice का मतलब क्या होता है? Bread slice. Lovely, correct. Anybody else? We all try करो. Slice means cutting, okay. Separation. Slice means a piece, okay, a piece of a bread. When we are talking about slicing, slice, a bread slice. Okay, what is the meaning of bread slice? A piece of the bread. Is it or not? A piece of bread. यही होता है कि नहीं होता? A piece of bread is your slice. ठीक है? A piece of bread is nothing but your slice. Now, when we are going to use slice, कब use करते हैं? First you need to understand. If we want to access a single element with respect to list and tuple, it is an element. With respect to a string, it is a character. String के respect में ये character है. If you want to access a single element or a group of element slash character, then we will use. तो स्लाइसिंग हम लोग यूज करते हैं जब हमको मल्टीपल चीजें एक्सेस करनी हो या एक चीज एक्सेस करनी. What is your slice means? Slice means a piece. So remember this, when we are talking about indexing is capable for accessing a single element only. आप सिर्फ single element access कर सकते. But when we are having slicing, either you can access single element or you can access a group of element. Group of element means multiple elements. तो आप multiple elements को भी access कर सकते. Okay, that is the use of slicing. So if you want to access a single element, you can go with index. If you want to access more than one element, you will go with. Okay, so this point please do. When you are going to use indexing, when you are going to use one element indexing, multiple elements. Okay. After this, next point is how many types of slicing is? कितने type की slicing? Remember this, two types of slicing is. First is known as positive slicing. Positive slicing. And second is known as negative slicing. यहाँ पे थोड़ा सा guys आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा. Because if you are not focusing, if you are skipping a single point as well, no, it is very difficult to understand. अगर आप एक point भी miss करोगे तो problem हो जाएगी. Now positive slicing. So when we are having positive slicing, in that scenario, किधर side में move? In which direction we need to move? Remember this. When it is positive direction, when we are having positive slicing, we will move in forward direction. Forward direction basically means, what is the meaning of forward direction? It is left to. Same as it is if it is backward or negative slice. In that, if it is negative slice, in that case, you need to move in backward direction. देखो एक एक पॉइंट पे गाइस फोकस करो, क्योंकि अगर आप कहोगे फिर से पूरा एक्सप्लेन करो, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. बहुत सारी चीजें हैं. Direction is right to left. So let me write the syntax, then I will tell you what is positive slicing, what is negative slicing. Syntax is very very simple. You will write your name. For example, if it is a list, you will write your list name within a square bracket. First you will write from where you want to start. आपका slice कहाँ से start? You need to tell your slicing. That means from beginning, from where you are going to start. That you need to give. Then you need to go. You need to give your ending. कहाँ तक जा? Up till when you want to. So that is your. And one more argument is there, that is known as. What is that? समझना. Step basically means that how many elements we need to skip. कितने element skip करते हुए आगे बढ़ो. How many elements we want to skip. Okay, so that thing is nothing but your step. So let me write clearly what is the meaning of start first. So basically start means from where we want to slice our
कहां से स्टार्ट करना, then we are having end means up till when we need to stop, that means कहां पे रुकना है. And what is your step? Step is also known as gap. So basically step means how many elements we need to skip. Elements needs to, so how many elements needs to skip, that we need to give. Okay, so this is the thing. Next point is how we will understand whether we need to perform positive slicing and whether we need to perform negative slicing. ये अगला. What is that? Try to understand. Positive slice. How you can identify that कि ये positive slice, कैसे आपको पता चलेगा कि it is your positive slice? So few points I am going to. If step value is positive, that means we need to move in forward direction. आपकी डायरेक्शन क्या रहेगी? Forward direction, that is your left to first. अगर आपकी स्टेप वैल्यू पॉजिटिव है, इफ योर स्टेप वैल्यू इज पॉजिटिव, यू विल गो इन फॉरवर्ड. तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, इफ यू आर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, then by default, if you are not giving a start value, okay, start value is optional. ये वैल्यू ऑप्शनल होती है, अगर आप दे रहे हो तो भी ठीक है, नहीं दे रहे हो तो भी ठीक है, ये ऑप्शनल है. तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या हो? So by default, start value will be by default जो वैल्यू होती है वो होती है 0. एंड वैल्यू क्या है? Remember this, end is managed. This end is managed. So this you need to give. End आपको देना पड़े. ठीक है. After this we are having this. So step will always be positive. पहले तो ये याद रखना, क्योंकि we are doing positive slicing. So in case of positive slicing, अगर आपकी step value positive है, तभी आप positive slicing कर सकते. That means in forward direction you need to. So in which direction you need to move, that will be specified with the help of step value. आपकी step value बताएगी कि आपको किस direction में move करना, forward or back. Okay, so in which direction you need to move, that is going to be specified by step. Okay, after this, step value is positive, but this is also optional. ये भी आपका optional. तो अगर ये optional है, तो by default ये value क्या है? तो remember this, by default step value is आपकी बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू रहती है. अब एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है. व्हाट इज दैट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. दैट पॉइंट इज इन केस ऑफ पॉजिटिव स्लाइसिंग के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ पॉजिटिव स्लाइसिंग, एंड विल गो टिल एंड -1. रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर हमारी एंड वैल्यू 10 है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 का मतलब है ये सिर्फ 9 तक जाएगी, क्योंकि एक माइनस तक जाती. सो इफ आई हैव गिवन एंड वैल्यू एज 10, इट विल गो टिल 9, सिर्फ 9 तक जाएगी. ओके, अप टिल 9 ओनली यू विल, that is. Let me give you one example of positive indexing, then you will be more comfortable with this. Okay, तब और comfortable. You want list example, tuple example, or tuple और list example, और tuple example और string example? किसका example ले? ये चीज explain करने के लिए सर. Which example you want? List, tuple, list. एक और कोई बता दो. Tuple, okay. Okay, let's take tuple. Many of you are taking tuple. So let me take. I am taking 10, 20, 30.
मैं इसके बाद कुछ और भी लिख रहा हूं, लाइक हाई, एंड देन आई एम राइटिंग बाय। ठीक है, समझना। सपोज दैट आई वांट टू एक्सेस दिस हाई एंड बाय, मुझे हाई चाहिए और बाय चाहिए। What I want high and buy. Two things I want. These two elements I want. So try to understand. First, let me write the syntax. Syntax. So syntax is, you will write your tuple name, whatever tuple name it is. So tuple name within a square bracket, you will give your start index, colon your end index, colon your step. Step का मतलब क्या है मैं और बताऊंगा. See, I want to get high by. ये चीज मुझे चाहिए. Anybody, what is the starting? मुझे high से start करना. अब my result will be something like this. I want my result like high. And कोई बताएगा कि क्या, कहां से, कौन से इंडेक्स से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा? Because I want only this. So from where I need to start? At which point I need to start? Just think. It is started from C. 0, 1, 2 and 3. मुझे 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 3. मेरा स्लाइसिंग एरिया क्या है? थर्ड से स्टार्ट. सो आई विल राइट समथिंग लाइक print x of 3 is my start. Coming to the ending, what is my ending? I want to go till by. I want to go till by. So what is the index of this by? इस इंडेक्स by का क्या है? Anybody? See, 0, 1, 2, 3, 4, 4. बट अगर मैं 4 लिखता हूं तो ये बता सकता है 4 का मतलब ये कहां तक जाएगा? 4 का मतलब ये कहां तक जाएगा? कोई बताएगा? 4 का मतलब ये कहां तक जाएगा? If I am writing 4 here, then it will go till 3 only. 3 only. Why 3? Because if you will see, end will go till end minus 1. So if I have given 3 also, then it will go till 4 minus 1, that is 3. तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना. ठीक है, that's see. Now everybody write this syntax for accessing this 20, 30 and high. सब लोग सिंटेक्स लिखो जिससे मुझे एक्सेस करना है 20, 30 and high. Everybody. 20, you will start from 20 and I want to get answer till high. मुझे high तक आंसर चाहिए. Yeah. 20 I want 30, I want high. See, from where I need to start? मुझे 20 से start करना. What is the index of 20? 0, 1. From 1 I need to start. So let me write print x of, so from 1 I am start. Now I want to start, I want to stop at high. So 1, 2, but अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता, so 3 means 3 minus 2, that means 3 minus 1, that is 2. आपका 2 पे stop हो जाएगा. If 2 पे stop हो जाएगा, then I will get only 20, 30. But I want 20, 30 and high. तो मैं क्या करूंगा? एक वैल्यू और ऊपर तक जाऊंगा. So that means I will go till, let's see, 20, 30. Now everybody give answer. Let me give you more. अब मैं लिखूंगा, आप लोग आंसर बताना क्या है. हाँ, what answer we will get for this?
Everybody is correct. The answer is 30 high and by. See, I am starting from 2. 2 means 0, 1, 2. यहाँ से start करो. Till here we are going to start. What is my ending? 5. मैंने बताया end जो होता है वो end minus 1 तक जाता है. That means 5 minus 1, that is 4. It will stop at 4. So I will start from 2. 0, 1. यहाँ से start. 2. After 2, I will go till 4. So 2, 3. So this is your 30 high and by is your. Now in these 3 problems, if any doubt is there, please let. इन 3 प्रॉब्लम्स में अगर डाउट है, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है, अभी मैं थोड़ा लेवल बढ़ाने वाला हूँ. Everybody is comfortable with these 3 examples. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. What answer we will get in this case? I have not given any start. I have given my end value. I have given my end value. Now, if you have not given start value, then by default start index is 0. So ये क्या करेगा? 0 से start होगा और कहां तक जाएगा? 4 minus 1 is 3. ये 3 तक जाएगा. 0 से start होके 3 तक जाएगा. That means 10, 20, 30 and high is your answer. 10, 20, 30 and high is your. Now एक और मैं example लेता हूं. Let me take one more example. हाँ, just think what answer we will get for this. सोचना क्या आंसर आएगा. यहाँ पे एक गलती हुई थी मुझसे. मैंने यहाँ पे बता दिया था मैंडेटरी होता है एंड. रिमेंबर दिस एंड भी मैंडेटरी नहीं. इट इज ऑल्सो ऑप्शन. दिस एंड इज ऑल्सो ऑप्शन. सो व्हाट इज माय बाय डिफॉल्ट वैल्यू? बाय डिफॉल्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू is the last index of the list. जो भी लास्ट इंडेक्स होगा वो हमारी लास्ट वैल्यू हो जाएगी अगर हम लोग नहीं देंगे एंड. इन दिस केस क्या है? समझना गाइस. सी, you are starting from 2. 2 means 0, 1. यहां से हमको स्टार्ट करना है. दैट इज क्वेश्चन. आई हैव नॉट गिवन एंडिंग इंडेक्स. मैंने एंडिंग इंडेक्स तो दिया नहीं है. जब मैंने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लास्ट इंडेक्स तक चला जाता है. और इसको ये भी कह सकते हैं एंड ऑफ द लिस्ट तक जाता है. ओके, सो एंड ऑफ द लिस्ट. बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज द एंड ऑफ द लिस्ट. लेट मी राइट हियर इज द एंड ऑफ द लिस्ट. तो अगर मैं यहां से इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2, आई विल गो एंड ऑफ द लिस्ट. एंड ऑफ द लिस्ट मींस 5. सो व्हाट इज माय आंसर? 30 हाई एंड. तो अगर आप एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हो तो क्या होगा? स्टार्टिंग तो आपने दी है तो स्टार्ट से जाके एंड तक चला जाए. जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वहां तक चला जाए. सो आंसर इज 30 हाई एंड. आस्क योर डाउट्स. In these examples, if any doubt is there, please let me know. अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछ लो क्योंकि मैं लेवल बढ़ाने वाला हूँ आप क्वेश्चंस. क्योंकि ये सिंपल था तभी मैं बता रहा था. एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल? सब कंफर्टेबल हो यहाँ तक? Why we are taking -1? We are not taking -1 Pranjal. According to the Python syntax, Python का syntax क्या कहता है? जो एंड की वैल्यू होती है, जो भी हमारी लास्ट वैल्यू होती है ना, वो एक्सक्लूड होती है. एक्सक्लूड का मतलब वो कंसीडर नहीं होती है. उससे एक कम तक जाता है. तो अगर 5 दिया है तो 4 तक जाएगा. ये पाइथन का स्टैंडर्ड है. ये सिंटेक्स है पाइथन का. ये हम लोग नहीं कर रहे हैं. ये पाइथन कर रहा है. पाइथन का सिंटेक्स है. हम लोग की तरफ से ये -1 वाला कुछ नहीं होगा. ठीक है. नीतीश, it is a syntax of Python.
जो एंड वैल्यू होती है, जितनी भी आप एंड वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एक्सक्लूड होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूड? एक्सक्लूड मींस दैट वैल्यू विल गो अप टिल प्रीवियस वैल्यू, जो भी उससे पहले वैल्यू होगी वहां तक जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग एंड वैल्यू एज 5, सो 5 मींस इट इज गोइंग टिल 4 हो, 5 तक नहीं जाएगा। सेम एज इट इज इफ आई एम हैविंग हियर 4, 4 मींस इट विल गो टिल 3 हो। ठीक है, ये पाइथन का सिंटेक्स, ये हम लोग नहीं कर रहे कि -1 तक जा रहा है, नहीं, ये पाइथन का सिंटेक्स है। पाइथन का सिंटेक्स ये चीज बोलता है कि इफ यू आर परफॉर्मिंग पॉजिटिव स्लाइसिंग, इन दैट केस व्हाटएवर एंड वैल्यू यू हैव गिवन, दैट एंड वैल्यू इज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मींस वो एंड वैल्यू आपका स्लाइसिंग का पार्ट नहीं होगा, उससे एक कम वैल्यू तक आपका स्लाइसिंग का पार्ट। इसका मतलब ये होता है, इट इज योर पाइथन कोडिंग स्टैंडर्ड। ओके, फाइन। After this, next one. Now, if you will see, I have not given step value. तो मैंने जब step value नहीं दी, anybody just think what is before that? Let me take one more example. एक और example लेते हैं, then we will discuss. What is the answer we will get for this? I have not given start. I have not given end. In this case, what is my starting index? What is my ending index? In this case, you will get complete tuple. Why complete tuple? Your start index is 0 and end index is end of the tuple. जो भी लास्ट तक होगा वही कंसीडर हो जाएगा। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होके लास्ट तक जाएगा। लास्ट इज योर y. So in this case, you will get complete tuple as an answer. C. Complete tuple you have. Okay. So if you have not given a start index, by default 0 will be considered. If you have not given ending index, in that case, by default it will go till end of the list. जो भी last का end होगा वो consider हो जाएगा। Sir, value is 0 to 4, but mention 5. वही तो मैं बता रहा हूँ आपके, बाकी मैं ये चीज कह रहा हूँ, अगर 5 आप लिखते हो एंड में, तो 5 का मतलब है कि एक कम तक चले जाओ। तो 5 से एक कम कितना होगा? 4 होगा, तो 4 तक जाए। सेम एज इट इज यहाँ पे आप देखोगे, अगर 5 है तो 5 से एक कम चलेगा। यहाँ पे 4 था, 4 का मतलब है 4 से एक कम चले जाओ, दैट इज योर 3। जो भी एंड वैल्यू दोगे उससे एक कम तक जाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथन सिंटेक्स, दिस इज अ पाइथन रूल, when we are performing positive slicing, in that case whatever end value we are giving, that end value will always go till end minus 1. That means if you are giving end value as 5, it will go till 5 minus 1, that is 4. That is the reason why it is not 10 comma by for last question. अगर 6 हुआ तो एरर रहेगा? नहीं रहेगा एरर दुर्गा। अगर 6 भी रहेगा तो एरर नहीं रहेगा, मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, थोड़ा सा रुको, मैं बेसिक से चल रहा हूँ। Why it is not 10 comma y? Try to understand. Say this. I have given a start index here. क्या मैंने start index दिया है यहाँ पे? Just see. क्या मैंने start index दिया है? Have I like I have given a start index here. I have not given a start index. So if you have not given a start index here, what is my by default value? 0 is my by default. So it will start from 0. 0 से start होगा, that is 10. After this, I have not given end index. मैंने end को भी नहीं दिया. So if you have not given end value, then by default, what is my value? It is end of the list. So what it will do? It will start from 0 and it will go till end of the list. Start to 0 index से होगा और ये आखिरी तक चला जाएगा. So it will start from this point and it will take this, then it will take this, then it will take this, then it will take this, and that's it. This is the last element. So it will stop. Okay, so that's why we are getting complete list. इतना ही है. क्लियर हुआ? ये एग्जांपल्स क्लियर हुए? Everybody is comfortable with these examples. Okay, next point is I have given step value here. क्या मैंने step value दी है यहाँ?
आई हैव गिवन स्टेप वैल्यू हियर, कहीं पे भी स्टेप वैल्यू मैंने दी है इसमें स्लाइसिंग में? आई हैव नॉट गिवन स्टेप, बट रिमेंबर दिस थिंग, बाय डिफॉल्ट देयर इज वन स्टेप वैल्यू हियर, बाय डिफॉल्ट देयर इज वन स्टेप वैल्यू हियर. व्हाट इज दैट स्टेप वैल्यू? 1 इज माय स्टेप. सो अगर आप स्टेप वैल्यू नहीं भी देते हो तब भी 1 स्टेप वैल्यू कंसीडर होगी. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप वैल्यू? ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं एग्जांपल्स देके बताता हूं, देन यू विल गेट मोर आइडिया. सी हियर, इफ स्टेप वैल्यू इज 3, अगर स्टेप वैल्यू 3, तो हमको कितने एलिमेंट स्किप करते हैं? और यू कैन से स्टेप वैल्यू इज 1, जो कि 1 था. In this case, your step value is by default value. What is my by default value? 1 is my by default. Okay. Now, if step value is 1, how many elements I am skipping? I am not skipping any element. That means 0 elements we are skipping. When step value is 1, I am skipping 0 elements. जब मेरी step की value 2 हुई, ठीक है, मैं example लूँ. How many elements I need to skip in this case? In this case, I need to skip 1 element. एक एलिमेंट हम लोग स्किप कर. If my step value is, in this case, how many elements I need to skip? 2 elements I need to skip. If my step value is something like 4, ठीक है, in this case, how many elements we need to skip? Same as it is, अगर step की value n है, then how many elements we need to skip? n minus 1 element we need to skip. Why I have taken this example? इससे आपको बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा what is the meaning of step. Let me take one example so that you will be more comfortable. मैं एक एग्जांपल स्मॉल लेता हूं, then you will be more comfortable with this. समझ लो. Right. You are going to start. कहां से स्टार्ट करना है guys? From where I need to start? Starting index. Anybody? What is my starting? It is 2. 2 means I will start from 0, 1, 2. यहाँ से start. From 30 I am going to start. What is my ending index? 5 means it will go till 4. 5 का मतलब है 4 तक जाए. So that means 0, 1, 2, 3, 4. So that means my slicing area is 30, high, अब यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ. यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ. अभी मैंने स्टेप पे बात नहीं की, अभी मैं बात करूंगा. I have just calculated 2 to 5. Between 2 to 5, that means 0, 1, 2. I will start from second index 3, 4. 2, 3, 4. That is this. सब लोग क्लियर हो? After this, let's move with step value. What is my step value here? 1 is my step. एक हमारी step है. ठीक है, समझ रहा? एक हमारी step value. एक अगर step value कितने एलिमेंट्स हमको स्किप करने हैं? How many elements I need to skip? 0 elements. 0 elements. So that means I am starting from 30. मुझे 30 से स्टार्ट करना. 30 के बाद मुझे कितने एलिमेंट स्किप करने हैं? कोई एलिमेंट स्किप नहीं करना है. दैट मींस 30 के बाद सारी चीजें ऐसे ही आएंगी. बिकॉज योर स्टेप वैल्यू इज 1. 1 मींस नो एनी एलिमेंट्स यू नीड टू skip. No any element you need to skip. Okay, so I am starting from 30. After 30, no any element I need to skip. That's why high and by same as it is you will get as a result. See. बट अगर मैं स्टेप वैल्यू को चेंज करता हूं, अब समझना स्टेप वैल्यू का खेल क्या है. इफ आई एम टेकिंग स्टेप वैल्यू एज 2, if I am taking step value as 2, in this scenario, try to understand what is the result. Try to understand my slicing area is same, that is 30, high, by. This is my slicing area. इतना तो मेरा slicing area. अब step value पे work करना. What is that? 30 से you are going to start from second index which is 30. So from 30 I need to start. यहाँ से start. Step value is 2. 2 means how many elements we need to skip? If step value is 2, how many elements we need to skip? कितने एलिमेंट स्किप करने होंगे? एक एलिमेंट को स्किप करना. दैट मींस I am going to start from 30. So starting तो same as it is print होती है. So 30 will be there. After 30, one element we need to skip. So after 30, हाई को आप स्किप करो. जब हाई को आप स्किप करोगे उसके बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट को देखो. बाय इज देयर, तो बाय ऐसे ही आ जाए. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा?
30 comma by. See, why 30 comma by? Because step value is 2. 2 means you are going to start from 30. I am going to start from 30. So 30 will be printed. After that, step value is 2. 2 means one element we need to skip. So after 30, skip one element. After skipping one element, the next element print same as it is. इस एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो पूछो, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। Why skipping high not by? जब स्टार्ट हम लोग करते हैं ना, उसके बाद का स्किप हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग समथिंग लाइक दिस, इफ माई स्टेप वैल्यू इज 2, इफ माई स्टेप वैल्यू इज 2, तो याद रखना जो स्टार्टिंग वाला रहता है वो हमेशा रहे। स्टार्टिंग हमेशा सेम एज इट इज रहती है। दैट मींस 10 तो हमारा सेम एज इट इज। 10 के बाद क्या हो? स्टेप वैल्यू इज 2। 2 मींस यू नीड टू स्किप वन एलिमेंट। तो वन एलिमेंट का मतलब क्या है? 10 हमारा स्टार्टिंग है, इस वजह से स्टार्टिंग तो हमेशा रहेगा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एलिमेंट स्किप कर, तो 20 स्किप हो जाएगा। जब 20 स्किप होगा, नेक्स्ट एलिमेंट है 30, तो 30 सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। 30 के बाद एक और एलिमेंट स्किप कर, सो 40 एलिमेंट है, 40 इज देयर, सो 40 को, तो 40 को स्किप करने के बाद क्या आएगा? 50। सो 10 + 30 50 इज योर। बस इतना। स्टार्ट के बाद से, स्टार्ट हमेशा सेम एज इट इज प्रिंट होता है। स्टार्ट के बाद से स्टेप वर्क करना चालू करता है। स्टार्ट विल ऑलवेज बी योर आंसर। स्टार्ट इज ऑलवेज बी योर आंसर। चलो एक और एग्जांपल। हाँ, देख, व्हाट इज माय स्टार्टिंग? स्टार्टिंग इज वन, स्टार्टिंग है हमारा, ठीक है। सो दैट मींस आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 20। मुझे 20 से स्टार्ट। आई हैव गिवन स्टेप वैल्यू, एंड वैल्यू इज 5। 5 का मतलब क्या होता है? 5 means we will go till 4. मैं 4 तक जाऊँ. So I will start from here and I will go till 4th index. So what is there? 20, comma, then 1, 2, 3, 4. That means 20, 30, high, comma, by. This is our slicing area. इतना हमारा slicing area. अब यहाँ पे हमको स्टेप वैल्यू अप्लाई करनी। अब स्टेप अप्लाई कैसे करते हैं समझो। जो भी स्टार्टिंग होगी वो तो सेम एज इट इज, तो 20 तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब 20 के बाद क्या? 20 के बाद क्या होगा? 3 हमारी स्टेप है। देखो गाइस, फोकस करो यहाँ पे, क्योंकि अगर स्किप करोगे, एक भी पॉइंट स्किप हुआ, सारा चीज जाएगी, सारी चीजें निकल जाएंगी दिमाग से, अगर एक पॉइंट भी आपने स्किप किया। सी स्टेप वैल्यू इज 2, तो पहला एलिमेंट तो सेम एज इट इज प्रिंट होगा, तो 20 तो सेम एज इट इज प्रिंट। नो, स्टेप वैल्यू इज 3। 3 मींस दो एलिमेंट को स्किप करना, सो 20 तो हमारा सेम एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? दो एलिमेंट को स्किप कर, सो 30 और हाई जो है वो स्किप हो जाए। सो आफ्टर स्किपिंग 30 एंड हाई, व्हाट इज माय नेक्स्ट एलिमेंट? बाय इज माय नेक्स्ट। सो व्हाट इज माय आंसर? 20 एंड बाय इज योर आंसर फॉर सी। अब बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ। हाँ गाइस, इज दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? स्टार्टिंग विल बी ऑलवेज, स्टार्ट हमेशा रहेगा, उसके बाद हमको स्किप करना। आफ्टर दैट वी नीड टू स्किप। ओके ओके, अशोक, इज इट क्लियर और नॉट? Ashok, for you, is it clear or not? Are you there? Ashok. Alok, sorry, not Ashok, Alok. क्या क्लियर हो गया? ठीक है, चलो और एग्जांपल। इसको नहीं क्लियर हुआ, आई विल गिव अ लॉट ऑफ एग्जांपल, डोंट। मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा इसके। I am taking something like this, and then I am taking like this, then I am taking something like 4। 4 में 2 लेते, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ। अब इसका आंसर क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनीबॉडी टेक अ गेस क्या रिजल्ट? लेट मी शो यू द लिस्ट एट अपन।
सब लोग ट्राई करो, देन आई विल। ओके ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। I have not given start index. I have not given end. अगर हम स्टार्ट और एंड दोनों नहीं देते हैं, in that case, complete list, complete tuple will be your slicing area. That I have already told you. आपका complete tuple slicing area रहता है अगर हम स्टार्ट और एंड दोनों नहीं देते। Okay, so this is my slicing area. अब हम स्टेप पे फोकस। So step value is 2. 2 means how many elements we need to skip? प्रांजल, कितने एलिमेंट स्किप करने पड़ेंगे? अरे स्टेप वैल्यू इज 2। 2 मींस एक एलिमेंट स्किप करना पड़ेगा, इस लाइन को फोकस करो। अगर n वैल्यू है तो n माइनस 1 एलिमेंट स्किप करने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, तो अगर 2 है तो 2 माइनस 1 1 1 एलिमेंट स्किप करना पड़ेगा। नाउ 10 इज योर स्टार्टिंग, सो 10 तो हमेशा रहेगा। 10 इज योर स्टार्टिंग, दैट्स व्हाई 10 विल ऑलवेज बी। आफ्टर 10 मुझे एक एक एलिमेंट स्किप करते चलना, सो 10 विल बी प्रिंटेड। आफ्टर 10 skip next element, so 20 is there, 20 will be skipped. Okay, so the result will be like, let me write here, 10 will be there, after that skip next element, 20 will be skipped. 20 skip होने के बाद next element क्या आएगा? 30। 30 के बाद स्टेप वैल्यू क्योंकि 2 है, मुझे स्किप करना पड़ेगा 1, सो 30 इज देयर, आफ्टर 30 स्किप हाई। तो जब हाई स्किप हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? बाय। सो 1030 बाय इज योर, 1030 बाय इज योर। अब बताओ किसको किसको क्लियर नहीं हुआ है? हाँ गाइस, हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस? नहीं क्लियर हुआ, फ्रैंकली बोल दो नहीं क्लियर हुआ, आई विल एक्सप्लेन, डोंट। मैं और एग्जांपल दूंगा। जिसको नहीं क्लियर हुआ, नो नीड टू वरी, प्लीज लेट मी, मुझे बताओ तो। सर नहीं समझ आया। ओके समीक्षा, आई विल टेल। आफ्टर एवरी वैल्यू, हाँ आफ्टर एवरी वैल्यू वी नीड टू स्किप। हर बार स्किप करनी होगी, ठीक है, हर बार स्किप करनी होगी। लेट मी शो यू मोर एग्जांपल। ठीक है, जिसको नहीं क्लियर हुआ मैं फिर से एग्जांपल दे, दिस आई एम गोइंग टू टेक, अब समझ। दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नो नीड टू वरी, लेट मी टेक एग्जांपल। 1 to 5, मुझे 1 से 5 तक जाना है, दैट इज दिस। फ्रॉम 1 to 5 दिस इज माय, ये मेरा स्लाइसिंग एरिया। नाउ स्टेप वैल्यू, लेट मी टेक स्टेप वैल्यू एज 2। ठीक है, स्टेप वैल्यू इज 2, तो पहला एलिमेंट जो है वो तो सेम एज इट इज प्रिंट होता है, तो 20 तो ऐसे ही आ जाएगा। 20 आने के बाद क्या करना? 2 का मतलब है एक एक एलिमेंट स्किप करते चलना है, हर बार एक एक एलिमेंट स्किप करते चलना। दैट मींस 20 तो सेम एज इट इज प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 30। 30 को स्किप करो। जब 30 को स्किप कर देंगे तो उसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? तो हाई के बाद भी जो नेक्स्ट, क्योंकि हमको एक एक एलिमेंट स्किप करते चलना, तो हाई के बाद भी जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो स्किप होगा, एक एलिमेंट स्किप होगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 20 कॉमा 20 कॉमा। थोड़ा आइडिया लगा आप लोग? पहले इतनी तो क्लियर हो तब तो लॉन्गर स्लाइसिंग में लो। अगर स्किप वैल्यू अगर 3 होगा तो दो दो स्किप करते चलेंगे। इफ स्टेप वैल्यू इज 3, लेट मी टेक दिस एग्जांपल। सी, सपोज दैट दिस इज माय टपल, दिस इज माय स्लाइसिंग एरिया, मेरा ये स्लाइसिंग एरिया है। इफ स्टेप वैल्यू इज 3, कैसे होगा आप समझ। फर्स्ट वैल्यू इज देयर, दैट विल ऑलवेज बी प्रिंट, पहली वैल्यू हमेशा सेम एज इट इज आती, सो 10 विल बी सेम एज इट इज। आफ्टर 10, 3 मींस 2 एलिमेंट्स वी नीड टू skip, सो दैट मींस 20 and 30 will be skipped, so 20 30 तो छोड़ दिया जाएगा। सो 20 30 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 40, तो 40 आ जाएगा यहाँ। अब 40 के बाद क्या होगा? फिर दो एलिमेंट स्किप हो जाएंगे, तो पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, ये दोनों एलिमेंट स्किप हो जाएंगे। जब ये दोनों एलिमेंट स्किप हो जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 70, तो 70 ले लो। अब 70 के बाद भी दो एलिमेंट स्किप होंगे, तो 70 के बाद 80 है एंड 100 है, तो ये दोनों एलिमेंट स्किप हो जाएंगे। तो इसके बाद कोई एलिमेंट बचा नहीं है, इस वजह से रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1047। दिस इज योर समीक्षा। थोड़ा आइडिया लगा कैसे होगा?
ठीक है, चलो मैं और एग्जांपल देता हूँ जिनको नहीं क्लियर हुआ तो, ठीक है, मैं इसी टपल को थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू, इस टपल को नहीं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, लेट मी टेक वन मोर टपल, दिस टपल इटसेल्फ आई एम गोइंग टू टेक, ठीक है, this is up. Now see, those who are not able to understand, try to understand. I am writing 1 comma 7 comma 3. अब 3 नहीं 2 ले लेते हैं, अंडरस्टैंड, चलो 3 ले, ठीक है. Now, what is my answer? First, you need to capture the slicing area. Slicing area is between 1 to 7. तो 1 to 7 को पहले अलग निकालो. What is that? 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 तक जाएंगे हम लोग. क्यों 6 तक जाएंगे? क्योंकि 7 का मतलब है 7 minus 1, that is 6. So our slicing area will be 20, 30, 40, 50, 60, 70. This is my slicing area. अब क्या है, ये स्टेप वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन के लिए, मैंने 2 ले लिया, समझ. स्टार्ट वैल्यू विल बी सेम एज इट इज, पहली वैल्यू तो सेम एज इट इज आती, उसके बाद क्या है, स्टेप वैल्यू है 2. 2 मींस वन एलिमेंट वी नीड टू स्किप, सो 20 विल बी प्रिंटेड बिकॉज इट इज योर फर्स्ट एलिमेंट. आफ्टर 20 वन एलिमेंट विल बी स्किप, सो 30 विल बी स्किप. जब 30 स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा जो कि है 40, सो 40 सेम एज इट इज आ जाएगा. 40 के बाद फिर क्या होगा, एक एलिमेंट फिर स्किप हो जाएगा. फिर क्या होगा, एक एलिमेंट स्किप करने के बाद क्या बचेगा, 60. 60 के बाद फिर एक एलिमेंट स्किप हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा, 20, 40, 60. अब थोड़ा आइडिया मिला आपको? कोई ऐसा है जिसको क्लियर ना हुआ हो? इफ आई वांट टू, अरे नितेश, डोंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप पूछ रहे हो स्टेप वैल्यू 10 होगी तो क्या हो. प्लीज गाइस, ये चीज मत करो, पहले समझने की कोशिश किया. जो चीज मैं बता रहा हूँ आप उसको समझो. मैं बताऊंगा कि अगर स्टेप वैल्यू 10 हो जाएगी. अच्छा एक चीज बताओ, कोई ऐसा पॉइंट था जब तक मैंने स्टेप वैल्यू बात नहीं की थी तब तक कोई ऐसा पॉइंट था जो मैंने स्किप किया था? मैं खुद कवर कर लूंगा, बट पॉइंट इज आप फोर्स ना करो. अभी मैं सीधे ले लूंगा 10, आप कंफ्यूज हो जाओगे. मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, मैं बहुत बार बता चुका. आप कह रहे हो स्टेप वैल्यू 10 ले ली जाए, मैं ले सकता हूँ 10, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टेप का मतलब क्या है. First, you need to understand what is the meaning of a step. Then only you will understand whether if I am getting a step value is 10, then what will be the result. Okay. Please explain my question. Okay. क्या प्रॉब्लम है इसमें? See, first consider the slicing area. Slicing area is you are starting from 0 and going up till 5 minus 1, that means 0 से start करके 4 तक जाना. So my slicing area will be 0, that is 10, and we will go till 4. 0, 0, 1, 2, 3, 4. This complete is my slicing area. That is 10, 20, 30, 40, 50. अब इसके बाद क्या है? Step value is 2. 2 means you are going to start from first element. तो first element same as it is print होता है. So 10 will be printed same as it is. After that, 2 means one element you need to skip. So 10 will be printed because it is the first element. After 10, next element will be skipped. So 20 will be, जब स्किप होगा तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कंसीडर किया जाता है. सो 30 विल बी देयर, सो 30 विल बी प्रिंटेड. आफ्टर 30 अगेन स्किप वन एलिमेंट, सो वन एलिमेंट इज स्किप अगेन, सो 40 विल बी स्किप. देन 50 इज देयर, 50 हमारा स्किपिंग के बाद आया, इस वजह से 50 कंसीडर होगा. सो आंसर इज 10, 30, 50. 10, 30, 50 इज योर आंसर. क्लियर हुआ? अब बताओ ये क्लियर हुआ थोड़ा बहुत स्लाइसिंग? दिस इज योर पॉजिटिव स्लाइसिंग. This is your positive slicing. Whatever we have discussed, that is your positive slicing. If you will see the step value, all the step values are positive. सारी step value positive. सारी step value.
Now, after this, let me take one more scenario. Suppose that I am writing print x colon 1 comma 7 comma 1000. हाँ, अब इस केस में क्या रिजल्ट है समझना. I am going to start from 1 going up till 7. My slicing area is, this is your slicing area. इतना मेरा slicing area है. ठीक है. 1 से 7 के बीच में ये हमारा slicing area है. Now first element will be printed same as it is. मैंने बताया पहला element हमेशा same as it is print. So 20 is there. So 20 तो आपका same as it is आ जाएगा. अब आ जाओ step 100. 100 means how many elements we need to skip? 100 means how many elements we need to skip? 100 minus 1, that is 99. 99 elements I need to skip. Now see, this is your first element, this is your second element, this is your third element, this is your fourth element, this is your fifth element. Fifth element, your list has been complete. आपका स्लाइसिंग जो है वो खत्म हो गया है. तो जब स्लाइसिंग खत्म हो गया, आपका कौन सा एलिमेंट प्रिंट हुआ है? सिर्फ 20 तो प्रिंट हुआ है. सो द आंसर इज, बिकॉज आफ्टर 20 everything I am going to skip. Okay, that is the thing. क्लियर हुआ? ये पॉजिटिव स्लाइसिंग है. एवरीबॉडी इज क्लियर? ठीक है, ठीक है. हाँ, see this is my string, this is my string. Tell me what is the result we will get with this. अगर ये आ रहा है तो what result we will get? A string is given, index positive indexing and negative indexing, both things are given. Three and six. Yes, this one ing. ing. So you are starting from 3. 3 means from here I need to start. 6 means 6 minus 1, that is 5. I will start at 5. So step value is by default 1. 1 means no any element we need to skip, that is 0 element. So the answer is ing. ing is your answer. ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव. अब बताओ पॉजिटिव स्लाइसिंग सबको क्लियर हुआ? किसी को प्रॉब्लम है पॉजिटिव स्लाइसिंग का? मैं सोच रहा था नेगेटिव स्लाइसिंग भी करते थे तो तुम लोगों को होमवर्क, एंड आई डोंट थिंक नेगेटिव स्लाइसिंग अब हो पाएगा, बिकॉज नेगेटिव स्लाइसिंग इज मोर ट्रिकी एज कंपेयर टू पॉजिटिव स्लाइसिंग. पॉजिटिव स्लाइसिंग तब भी ठीक है, लेकिन नेगेटिव स्लाइसिंग बहुत ट्रिकी है. शैल आई स्टार्ट नेगेटिव स्लाइसिंग? 15 minutes you can expect, like 15 to 20 minutes at least लगेंगे नेगेटिव स्लाइसिंग. Okay, everybody is ready, I think. Yeah. Sir, ready or shall we start? Yeah, बहुत लोग ready. Okay, shall we start? चलिए नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर लेते हैं, फिर होमवर्क आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है. See, now how you are able to identify that it is a positive slicing? कैसे आप identify कर पाए कि ये positive slicing है? क्योंकि अगर आप focus करो step value, if you are focusing on step value, all the step values are positive. That's why you are moving in positive direction. If you will see the slicing, everything is there in positive direction. See, positive, positive, everything is in positive. But if my direction is negative, अब यहाँ पे please remember करना, this is very very important. Okay, I am going to make some notes for you so that you will be more comfortable with this. See, how you can identify that it is a negative slice. How you can identify that it is a negative slice. So if you want to identify if it is a negative slicing, in that case your step value will be negative. अगर आपकी step value negative है, then in that case you need to move in backward direction. Backward direction. Backward direction. Backward direction means right to left. Right to. ठीक है, पहला पॉइंट तो. नेक्स्ट पॉइंट इज, in case of negative slicing, your start is also option. But by default, what is my start value? -1 is my start. -1 my start.
End value is also option. End भी optional है, but in this case, what is my end value? By default value will be the end of the list in negative or in backward direction. जो भी backward direction में last value हो, that will be your by default. And coming to the step value will be negative. और अगर ये negative होती है, then we need to explicitly give, because by default positive step values. By default the positive value is, by default the step value is positive. But if you want negative slicing, you need to explicitly mention that. So explicitly you need to give negative step value. Okay, then only it is negative slicing. Then only it is negative slicing. Else it is not negative slicing. Okay. Now, in case of negative slicing, यहाँ पे एक थोड़ा सा twist है, please try to understand. Negative slicing में जो end की value होती है, that will go till end +1. +1 तक जाती है, minus नहीं जाती है. See, clearly I have mentioned, in case of positive slicing, end will go till end -1, that is fine. But in case of negative slicing, end will go till end +1. और निगेटिव स्लाइसिंग के केस में स्टेप देना मैंडेटरी होता है. स्टेप देना मैंडेटरी होता है, बिकॉज इफ यू आर नॉट गिविंग स्टेप वैल्यू, देन हाउ वी विल कंसीडर इट एज अ नेगेटिव स्लाइसिंग. ओके, सो बेस्ड ऑन द स्टेप सिंबल के बेसिस पे हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज नेगेटिव स्लाइसिंग और इट इज पॉजिटिव स्लाइसिंग. Okay, based on the step value only, you will understand whether it is positive slicing or it is negative slicing. Okay. Let me take examples. So I am going to remove this. Say, see, this is the thing I am going to take. Okay. Let's take one example. Simple example first I am taking, then I am going to increase the level. See, I am taking -1, go up till -6, and then I am writing -1. Okay. Now, everybody try to understand. Step value is positive or negative? स्टेप वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पहले इस पे फोकस. इट इज नेगेटिव. स्टेप वैल्यू क्या है? नेगेटिव है. अगर ये नेगेटिव होती है, इफ इट इज नेगेटिव, देन योर डायरेक्शन विल बी चेंज्ड. आपकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी. व्हाट इज दैट? लेट मी शो यू. if your step value is negative, and this is my list, okay, if my this is my area, this is my slicing. अब इस केस में बहुत बड़ा चेंज होता है. लेट मी शो यू व्हाट इज दैट चेंज. इफ दिस इज अ थिंग, स्टेप वैल्यू इज नेगेटिव. नेगेटिव मींस आपकी डायरेक्शन पहले स्पेसिफाई होती है. डायरेक्शन इज दिस. सो दैट मींस यू विल गो इन दिस डायरेक्शन. हमारा स्टार्ट कहां से रहेगा? फ्रॉम वेयर आई विल स्टार्ट? आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. And what is the index value for this? It is by default minus. And what is this index value? This is your -2. This is your -2. This is your -3. ठीक है, like this it will go. इस तरह से ये बढ़ता चला है. Now try to understand. My slicing area is minus. So I will start from -1, which is 1/3. Now -6. अब यहाँ पे ध्यान रखना. -6 and will go till end +1. -6 + 1. What is the meaning of this? It will go till -5. -5 तक जाए. So that means I have to start from -1 and I will stop at -5. ये है हमारा माइनस. Okay, -1, -2, -3, -4, -6. So my slicing area will be this part. इतना हमारा पार्ट है. 90 से लेके 1/3. 90 से लेके this part is our slicing. 90 to 1/3. This part is your slicing area. अब समझ लो. You need to start from 1/3. You need to start from 1/3 and you need to go till -5 in a backward direction. अब कोई लोग बताएगा कि आप -1 से -5 पे बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं. In backward direction. Backward direction is ulti direction. -1 is my start index. This is my start index. This is my end index. तो क्या -1 से -5 बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है? ठीक, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. कैन वी डू इट और नॉट?
सिंपली देख लो डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड। स्टेप वैल्यू का मतलब क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन। So that means we will start from -1, that is 130. Then I will get our result as 120. Then I will get result as 110. Then I will get result as 100. Then I will get result as, this is your result. ये क्या है, ये हमारा result. Okay. So if I am going to run this, you will see same result we are going to, same result. See. Now do some change. Change करता हूं मैं यहाँ. If I am taking step value as -2, अब समझ लो कैसे हो. See, this part is your slicing area. इतना पार्ट आपका स्लाइसिंग एरिया. अब स्टेप वैल्यू है हमारी -2. टू मीन्स कितने एलिमेंट आपको स्किप करने होंगे, एक एलिमेंट स्किप करना. So that means 130 is your first element, so that will be printed same as it is. तो 130 तो पहले से आएगा. After that, skip next element. So 120 will be. Then 110 is there, so 110 will be there same as it is. फिर क्या होगा, 100 को skip. फिर क्या बचा, 90. तो आंसर क्या आएगा, 130, 110 and that's it. See, 130, 100 and 110 and इन दो प्रॉब्लम में किसी को डाउट? In these two problems, if you want to ask, you can please. Backward direction में मूव कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखो. We are starting from here, -1, and we are going up till this direction, उल्टी डायरेक्शन में चल. If anybody is there who is not able to understand this, please let me know. Please let me know if anybody is having any issues. ठीक है, अब चलो और एग्जांपल करते हैं. Let me do more example. Now try to understand. If I am giving something like this, अब सोचना क्या आएगा. Everybody just take a guess. What is my result now? In this case, what is my result? I have given colon -1. See here I have written. सारे तो प्रिंट होंगे बट किस ऑर्डर में होंगे, यहाँ पे ऑर्डर बदल जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस स्टेप वैल्यू, योर ऑर्डर विल चेंज. कंप्लीट लिस्ट यू विल गेट बट योर ऑर्डर विल बी चेंज. हियर यू विल गेट रिवर्स लिस्ट एज एन आंसर. व्हाई रिवर्स लिस्ट? अब देखो जिसको नहीं किया. सी, those who are not able to understand, please say this. I have not given any start value. So if you have not given any start value, by default start index is -. I have not given any end value. So by default end value will be in backward direction last element. So backward direction तो ये direction होती है, इस direction में last element क्या है? This is your last. So that means I will start from here. I will start from here, and this is my start, and I will stop at this. End is this. ठीक है, एंड इज ठीक है. अब आ जाओ स्टेप. स्टेप इज योर -1 मींस नो एनी एलिमेंट वी नीड टू स्किप. नो एलिमेंट वी नीड टू स्किप, कोई एलिमेंट स्किप नहीं करना है. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नेक्स्ट स्टेप इज यहां से हमको स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है, कोई एलिमेंट स्किप नहीं करना. बट डायरेक्शन क्या है? बैकवर्ड. बैकवर्ड का मतलब क्या है? यहां से स्टार्ट होगा. सो 130, फर्स्ट एलिमेंट इज योर 130, नेक्स्ट एलिमेंट इज योर 120, देन 110, देन 100, डैश 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 अप टिल 10. अब कोई बताएगा क्या ये रिवर्स ऑफ द टपल या लिस्ट की नहीं है? इज इट रिवर्स और नॉट? ये रिवर्स है कि नहीं? जो आउटपुट आ रहा है, इज इट रिवर्स ऑफ योर टपल और नॉट?
यस इट इज अ रिवर्स। तो अगर आपको रिवर्स करना है तो आप इस तरह से भी रिवर्स कर सकते हो। सी दिस इज ऑल्सो योर रिवर्स, दिस इज ऑल्सो योर रिवर्स। ठीक, अब बताओ निगेटिव स्लाइसिंग का थोड़ा आइडिया हुआ आप लोग? क्या अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप ट्राई कर सकते हो? इफ आई विल गिव यू क्वेश्चन, यू गाइस कैन गिव अ ट्राई फॉर दैट। ठीक है, मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना। अगर नहीं होते हैं मैं नेक्स्ट सेशन में स्लाइसिंग के वो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, बट एटलीस्ट ट्राई करना सब। सो एवरीबडी इज एबल टू सी माय स्क्रीन गाइस, ये लिंक आपको दिख रहा है? ठीक है, इस लिंक पे आप देखोगे, यहाँ पे नीचे गो डाउन, exercise 1 slicing, you will see this much of problems. Already questions are given 3 to 18, 2 to 14 like that. So you will see, you will try to solve all these things, all these problems. And here in bottom also you will see multiple questions are. तो ये सारी चीजें आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने की। ठीक है, प्रोग्राम्स अभी ना करना बिकॉज प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। सो प्रोग्राम्स आप स्किप कर सकते हो, नहीं प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, फॉर लूप नहीं किया है ना, तो प्रोग्राम्स आप स्किप कर सकते हो। बट ये जो स्लाइसिंग के एग्जांपल्स है उनको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये जो स्लाइसिंग के आपके एग्जांपल्स है ना, इनको आप ट्राई कर सकते हो। सो दिस लिंक आई एम शेयरिंग, एवरीबडी टेक इट एज एन होमवर्क एंड गिव अ ट्राई। ठीक है, सब लोग इसको ट्राई करना। अगर नहीं होता है नो वरी, आई विल टेक। ठीक है, बट एटलीस्ट गिव अ ट्राई टू सॉल्व दीज स्लाइसिंग क्वेश्चंस एवरीबडी। अब लेट मी टेक Q&A sections like doubts। मैं डाउट्स सब लेता हूँ आप लोगों की। आपकी सारी चीजें आप व्हाट्सएप पे ना शेयर करा करिए। ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर करने से देखिए इशू क्या होता है, सारे बच्चों को वही सारी चीजें आपके पास जैसे जाती है ना, तो मल्टीपल चीजें स्टोर हो जाती हैं आपके फोन। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ व्हाट्सएप पे जाओ, इसलिए मैं गूगल ड्राइव का लिंक देता हूँ, आप उसको रेफर करो, क्योंकि आपके फोन का स्टोरेज फालतू में फिल होता रहे। Right now we are having less thing, but day by day the notes and everything will be increased. Okay, so that in everyone's phone it is going to store. Even in my phone, a lot of things are stored. So that's why I'm not sharing anything on WhatsApp. I'm sharing just link. You can click on that link. You can go there. You can copy. That is the best instead of WhatsApp sharing or not. That is the ठीक है। हाँ, तो एक चीज और है, let me take Q&A now. So first is when you are trying. Okay, let me tell you how to run your code and do all those things again. देखना कैसे। See, what you need to do is when you are clicking on run button, आप जब भी run button पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे input देना पड़ेगा। You need to give in. If you are not giving input, your code will not. So how to pass the input? जो भी इनपुट यहाँ पे दिया है आप वही इनपुट देके चेक कर सकते हो कि क्या आपका आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं आ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इनपुट दिया, आपने कोड लिखा, फिर मैंने इनपुट दिया, फिर आप रन कोड पे क्लिक। जब आप रन कोड पे क्लिक करोगे आप देखोगे ये आउटपुट और ये आउटपुट सेम है। दैट मीन्स योर कोड इज करेक्ट। What is the meaning of that? That means this your code is correct. And once you are getting same answer, जब आपका आंसर सेम आ जाएगा, that means your code is correct. You can click on run test. When you are clicking on run test, then you will see your test case is passed or not. You will be able to. तो आपने क्या गलती की थी अमृता? What mistake you have done is you have not passed input here. So if you are not passing input here and you are directly clicking on run code, it will give you an error. See, this error you are putting. And this error is coming because you have not passed input here. If you pass this input here like this, then you can click on run button. It will check whether your code is working fine or not. See, if your code is working fine, then you can click on run test. That is a mistake. Amrita, is it clear or not? Yeah, session is over. Amrita, your doubt is clear? Okay. Next doubt. If there is a need to update something in tuple, directly we cannot. नीतीश, टपल में कोई अपडेट हम लोग नहीं कर सकते। अगर आपको टपल में अपडेट करना है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट। We need to convert that in the form of list, then you can perform that conversion. Okay, directly you cannot. Yeah, now you are getting Amrita answer. Now you are getting your answer or not, Amrita? Yeah, fine. सर जी एक बार अल्मा बेटर कोडिंग इंटरफेस कैसे यूज किया बता देना थोड़ा कर। वेरी सिंपल इट इज।
You will write your code here. Just simply write your code here. Where it is? You will simply write your code here. After writing, you need to test your code whether your code is working fine or not. What you need to do, whatever input is passed here, same input you need to give here, like 6 and 64. Okay. After giving that input, click on run. What it will do, it will check for this input. Your code is working fine or not. So if your code is working fine, then you can click on run test. So when I'm clicking on run test, you will see you are getting your score that is 100%. Your code is that is Alok. Clear? Alok. क्या क्लियर हुआ आलोक? ठीक है पढ़ना yes. Python what you have done here Anil. One list you have created. Need to find how many Python word in this. Please give idea. Okay. You are asking one list has been given and this is my list and you want to count how many times this word Python is present in this. The, directly we cannot do this. Up directly is many questions. Okay. What you need to do is you need to convert all these elements of the list in the form of string. तो मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रिंग को लिस्ट के एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं. एनीबडी रिमेंबर if I am having a list and you want to convert all the list element in the form of a string, how we will do? Not a split function, join method. We will use join method. So what you need to do is just simply convert this in the form of a string like this. ठीक है, ऐसे आप इसको convert करो. See, we are getting like this. Just store this in some variable. Element is equal to like some variable I have taken. Now you want to count whatever you want to count. Just apply count function like this. I want to count how many times Python is present. That's 2 times Python is present in your count. That is okay. Clear, Aaron? Okay. Okay. Any other question, doubt you guys want to ask? Please let me know. Sir, one problem with Alma Better ID that 3 given test cases are not visible. Harsh, actually, in the real time coding, we are not able to see the hidden test cases. In any of the online editors, if you are giving any recruitment exam, you will not able to see the hidden test cases. Hidden test cases आपको कभी भी दिखाए नहीं जाते. ठीक है, so it is, I understand that it is complicated, but you need to write your code and check whether your code is working for each and everything or not. ठीक है, रियल टाइम में भी आपको कभी भी टेस्ट केसेस दिखाई नहीं देते. ठीक है, कोई इसकी ट्रिक नहीं है. ठीक है, कोई इसकी ट्रिक नहीं है. This is a link, guys. You can refer this link for practice. You will see one string has been given, and with respect to a string, some questions has been given. And try to understand whether I am getting correct answer or not for all these questions. Okay, so this is just for your practice. You guys can refer that. Nitish, सब लोग इस लिंक को रेफर कर सकते हो प्रैक्टिस के. ठीक है. Any other doubt, question you guys want to ask? Please let me know. किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो. और रेस्ट कैन लीव दिस सेशन. आज के लिए इतना ही है. हाँ, पूछिए पढ़ना. You can ask पढ़ना. Please ask पढ़ना. If I have covered that thing, I will definitely explain you. अगर मैंने वो चीज कवर की है, I will definitely explain. Yeah, Ronnie. Team will share the feedback form. Please share your feedback there. Okay. Everybody, please share your feedback there. Team will share that feedback. Yeah, Parna, please ask your doubt about list. Are you asking, Aparna? Please ask your doubt if you want. Sir, extend method used to add one whole list to another, but if I want to add few elements, Aparna, directly it is not possible. Okay, directly it is not possible. If you want to convert few, like if you want to add few element of that, then you need to use looping concept. But we have not discussed looping concept here. That's why I have not discussed that particular thing. Okay.
सो अपर्णा, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, वी कैन नॉट डू दैट, ओके, विदाउट फॉर, okay, or else we can do with the help of slicing is one way, with the help of that we can do, okay, but with the help, with normal extend function we cannot do that, okay. For that we need to use loops concept, but till now we have not discussed loops. So once I will cover loop, then I will discuss your doubt. Okay, I will just write the code and then explain how to convert list into tuple. Very simple. You will use list function. For example, in chat box I have written some tuple is there, 1 comma 2 comma 3. Okay, this is my tuple and I want to convert this tuple in the form of list. So list 1 is equal to list of your tuple name, whatever tuple is, that is your tuple. That's second line will convert your code in the form of list 1. ठीक है, मैंने क्या किया, टपल क्रिएट किया, उस टपल को टाइपकास्ट कर दिया लिस्ट में. ठीक है, दैट वी कैन. एनी अदर डाउट, क्वेश्चन? ठीक है गाइस, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट. टीम विल शेयर द फीडबैक. Yes, we can do. Okay, Navi, your doubt is fine, but the point is, she is asking that only few elements you want to add. But if you want to add few elements, you need to put some condition. Okay, and you need to iterate over that. So in that case, we need to use for loop. So right now we have not discussed for loop. That's why I am skipping. Once we will complete for loop, then I will just explain you that one. Yeah. Okay. Bye bye everyone. Good night. Take care. Yeah, one element, one by one you can add. Okay, one by one we can add. गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय. क्वेश्चन सब लोग ट्राई करना, ठीक है, सॉल्व करना. बाय बाय, गुड नाइट. Yeah, thanks Lavi, thanks everyone. Bye bye, good night. Yeah, good night, bye bye.